play ball with a new season of cricket here from the Pindi Stadium, where 6 regional teams are all set to lock horns over the T20 format. Sindh were whisked away from a final spot last year over lesser run rate. This time, they will be going out with blistering batsmen and bowlers in their ranks. Ball kar diya. Perfect Yorker. A young skipper leading Southern Punjab is just the inspiration their side needed to boost their spirits. Having finished second last year, they are beaming with force and vigour. हवा में खेला, गैप में खेला, 4 रन्स के लिए. National T20 Cup is all set to blaze its way. Take your picks. Hello and welcome to a warm morning here at the Pindi Cricket Stadium. It's the start of the Kingdom Valley National T20. We've got the first encounter lined up, Sindh versus Southern Punjab, right here. Hello and welcome. It's quite warm out here, but we expect things to just cool down a little bit as the day passes by. We're all set for the first encounter and we have lots to talk about, lots to share. This is the premier tournament, the domestic tournament which finds talent for the international side, the Kingdom Valley National T20. And without wasting any time, I'm going to bring in Marina Iqbal, my guest today. How are you doing, Marina? All good, just a bit hot under the collar. It is a bit hot now. Let's just run through the National T20. We know the National T20 is the premier tournament. We've had KP as the champions in the last 2 years. Before that, it was the Northerns who were the champions. But KP has a very strong hold. Are they going to be the same this year? We'll have to wait and find out. But the good thing or the fresh thing about the National T20 this time around is lots of youngsters are getting opportunities in the 11. Lots of young captains are also coming in. And we'll talk about it in detail, but it's a good thing where you give responsibilities to the future of Pakistan cricket. Well, definitely, these are the tournaments and the platforms where you want to polish your like under 16, under 19 boys. And I think playing alongside with the senior one, it's obviously going to give you a lot of experience. And getting and coming up and showing your skill at the premier, as you said, premier domestic tournament, that's one to watch for. Let's have a look at the schedule because this tournament is going to be a bit lengthy, but it's got the full opportunity to come and display your talent. So it starts off with today as the 30th of August, and we go on and play a lot of games here in Pindi and up to the 7th, and then we, of course, move to Multan. We'll have double headers every day, and these are day starts because we know that the Asia Cup is also going on at the same time. So until the Pindi leg, we'll have all-day games, and once we get to Multan, then we'll have day-night encounters, and things may change. Weather will also keep changing because now we're entering winters nice and easy. But here, we've seen a lot about this particular ground. One of the best views over here. Lots of good cricket has been played. Last, Australia came down here. We had some good encounters, but that was, of course, the longer version. Well, definitely. I think this is one of the few grounds where both bowlers and batters can benefit out of. And you know that they're going to be a spin-dominant things around here. We will see a bit of turn as well. And I think the Pacers will have a go as well. But overall, T20's cricket is all about batting. And I think it seems like a good batting track as well. Yeah, it does. Okay, so now let's talk about the two teams. Let's hit Sindh now. Now they are being led by a young captain again, Saud Shakil. They do have the seniors there. You have Sarfaraz Ahmed, who will always be keeping a watch as to what's going on. Some seniors in the bowlers. Mir Hamza is performing very well in recent times around leagues around the world. So they have a fair balance of youngsters trying to show their talent and the seniors keeping a good eye on that. Well, they have players who've been around for domestic circuit for a while now. They have been performing on and off, and now the youngsters stepping in. Obviously, it gives a bit of a cushion to them because they know the seniors are around them. But again, they have to back themselves and obviously have to display what they have. Speaking of seniors, Sharjeel Khan, another exponent, he's known to be the T20 specialist, whether he's in Pakistan colours or he's playing any league or he's playing any domestic tournament here. And he has his own style. He doesn't really think about what format he's in, but it's T20 that suits him best. We've seen he's got that form going. We know he's got great hand-eye coordination, and he also has a lot of skill that supports him. These are his numbers. If you look at Sharjeel Khan, 11 games in the National T20 and he's got 371. The strike rate is the important thing in this format. Everyone looks at that. And average is pretty good as well, 33. Once he gets going,
then there's no stopping. So if you want to get Sharjeel Khan, I think you get him early. Well, definitely, that is the key point, and because he likes to dominate, he likes to make his presence count, you have to be very calculated where you're bowling him. And the not fun, actually, one technical thing that he doesn't have a lot of feet movement, and these numbers definitely shows that he loves pace. Obviously, he likes to go out there and utilize that power play. He loves to go after the bowlers. Have a look at that strike rate in terms of pace and spin as well. So probably the teams would rather rely more on spin, but for me, because his technique, he doesn't have a lot of feet movement, what works for him is that usually at the length ball, the batters turn to lean in and they can probably play up his shots, but he doesn't move a lot. He allows the ball to come near him, and that hard length, which usually batters go and play with softer hands, he allows himself to go and play lofted shots. But I think nonetheless, if it's pacer or spinners, the length is very important. If you pitch it up or a hard length area is going to hit you. But I think it'll be interesting to see against pace bowlers who have a decent pace. Shorter one, he hasn't been tested, and he's got out few times. Anything above his or around his shoulders, he has struggled. Okay, let's find out what Sharjeel does in this tournament. You're talking about what lengths would work. Let's find out what the pitch says. Always exciting, the first day of a brand new first-class season in Pakistan, and we're starting off with the National T20 Cup. We're here in Rawalpindi. It's hot and sultry here. The sun is out. The temperature is set at 30 and the humidity levels at 67%. Tough conditions for the players. If we look at the pitch, it doesn't look like a typical Rawalpindi pitch. It looks a bit drier and it doesn't have that sheen, which means that it may lack in pace. We can have a closer look here. There's some cracks here, but the grass is dead. But you look at the color of the pitch, it's slightly darker than normal. It means that because we're coming out of the rainy season, there's plenty of moisture underneath the surface. It's quite dry on the top. All in all, it should be good for batting, and we can see plenty of runs. One more thing we have to keep in mind as well is the outfield normally is cut short and is quite quick. But because of that rainy season, it's quite thick. That will also be in mind for the players. But all in all, we can see a cracking game of T20 cricket on this pitch here at Rawalpindi. All right, this was the pitch. So now we know what we're dealing with. What do the captains want to do? Let's join the toss and let's find out. Yes, it's time for the toss of the first Kingdom Valley National T20 Cup here in Rawalpindi. I've got the two captains alongside me, Salman Ali Agha for Southern Punjab and a brand new captain for Sindh in form of Saud Shakil. Nadeem Arshad is the match referee. Seems like Saud Shakil is going to flip the coin. Heads. Heads is the call. It has come down as heads. Salman Ali Agha, क्या करेंगे क्यों? हम bowling करेंगे, obviously very early start है 9:30, तो ऐसा लगता है थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, तो कोशिश करेंगे कि वो अगर फर्स्ट 4-5 ओवर्स में थोड़ा मॉइस्चर में थोड़ा सीम या स्विंग मिले तो उसे यूटिलाइज करें। यूजुअली जो रावलपिंडी का ग्राउंड है वो चेजिंग के लिए माना जाता है, तो क्या ये भी आपके जहन में है? जी बिल्कुल, ये भी एक फैक्टर का आप कह सकते हैं, लेकिन मेनली हमारा यही है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट है तो हो सकता है थोड़ा सा मॉइस्चर उसको यूटिलाइज करें। टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्या टीम खेल रही है? 3 फास्ट बॉलर्स हैं और 2 स्पिनर्स हैं और 5 बैट्समैन, 6 बैट्समैन। ऑल द बेस्ट सलमान अली आगा। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। थैंक यू। सऊद शकील, टॉस हार गया, आप जीतते तो क्या करते? हाँ ऑब्वियसली मैं भी जीता तो आज पहले बॉलिंग ही करता, लेकिन जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, कोई बात नहीं। यंग कैप्टन, काफ़ी सीनियर्स हैं आपकी टीम में, इज़ इट अ प्रेशर या अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं इस बात को? हाँ नहीं, इसमें कोई प्रेशर की बात नहीं है। मेरे उन्हीं से सीखा है हमने सारा कुछ, और ये है कि उनकी गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलें। क्या सोच रहे हैं कितने रन कर सकेंगे इस पिच पे पहले बैटिंग करते हुए? कोशिश करेंगे। हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट है, थोड़ा सा देखेंगे, पिच को असेस करेंगे, फिर थोड़ा डिसाइड करेंगे। अराउंड 170 to 180 की टारगेट कोशिश करेंगे। राइट, ऑल द बेस्ट सऊद शकील। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। राइट, द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज दैट सर्दर्न पंजाब हैव वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। Well, it's an interesting thing. I mean, every team that wins the toss in the shorter format wants to know what's the score on the board they like to chase. Now, these are the 11. So, as we said, Saud Shakil is the young captain. He's leading the side, which is Sindh. He's got the support of senior Sarfaraz. He's got Anwar Ali there, Sohail Khan there, Mir Hamza there.
You're seeing a leg spinner, Zahid Mahmood, being brought in. Abrar is not in the 11. And then plus top of the order, of course, you've got someone like Sherjeel Khan. Important number 3, Umair bin Yusuf. And you look at, of course, Southern Punjab. Well, the thing I like about them, they're going with 2 spinners. Obviously, they've got pace as well. They've got Mohammad Ilyas, Amin Gol. And at the top order, we can see that Shoaib Maqsood, he'll be very vital in terms of how they can set a total. So I think these are the key players you have to watch out for Southern. We've spoken about Sindh, but if you look at Southern Punjab, there are a few names you want to look out for if you are watching the Kingdom Valley National T20. Saroon Siraj is a good talent. Faisal Akram is a very good talent, who's the left-arm wrist spinner. Pakistan doesn't have many. In fact, I think he's the only one. Well, definitely. I've been in admiration of Faisal Akram. I think he's been not given enough chances to get him polished. I think these sort of platforms are really important. And he is an asset for Pakistan cricket, as you mentioned. All he needs is a lot of match exposure and support from the captains. He's a young bowler and he's a spinner. He's going to learn, but you have to give some time to him. All right, let's talk about head-to-head, Sindh versus Southern Punjab, and how they fared in the past here at the National T20. And this is the number right here. So it's pretty much close. 3 for Southern Punjab and 2 for Sindh. But Saud Shakil was saying that we'll first see and assess how the pitch is playing. The square and the characteristics don't really change. These guys have played a lot of cricket around here in Pindi as well. He says 170, 180. How do you see them going about, and is that the kind of score you should have in mind straight away? Well, when I look at the surface, I think it's going to be probably a tricky surface, not preferably for batting, I think. But again, how Sherjeel goes off, that's an important thing. But I think something around 155, 160 would be good enough on this one. Yeah, and the usual. So everyone's going through the ranks, how we usually see 3 fast bowlers, 2 spinners. Well, I like spin. I mean, in T20, you need to have a gamble. You cannot just wait for the opposition to, make mistakes and get wickets. I think someone like Faisal Akram, Ali Majid has been really brilliant with the new ball. I think these are the key players you need to back yourself if you want to go and have wickets, especially on the, pitches like where batting dominates. You have to have some kind of a mystery or some trump card where you can back yourself. So it's Sindh batting first. They've been asked to bat first. I think the key would be what kind of start Sherjeel gives them. Because Sherjeel is the kind of player, he won't really think much about the surface. He relies more on power and he backs himself. Well, that's how he plays and has been effective for over the years. We've seen him. Whenever he goes back in shell, it never works for him or either team. So he has to be there. And whenever you talk to him, he says he plays ball to ball and he relies on his strength. That has to be his game today even. All right, Marina. So here we are, Kingdom Valley National T20. Thank you very much for joining me. Let's join the action after the break, where the first match is being played at the Pindi Cricket Stadium. It's Southern Punjab versus Sindh.
Hello, very good morning from Rawalpindi Cricket Stadium. We're here for the first game of Kingdom Valley National T20 Cup 22-23. This is game number 1 between Sindh and Southern Punjab. The two umpires walking in, Rashid Riaz and Nasir Hussain, two very experienced umpires at domestic level. It's a very warm morning here in Rawalpindi, considering the weather we have all around the country. This is a very warm morning here. That's Southern Punjab winning the toss and deciding to bowl first, and rightly so. This is what the record tells of this ground. The teams who bowled first have usually won. It's a happy hunting ground for chasing here in Rawalpindi. I've been joined by Shah Faisal alongside me. A very warm welcome, rather, and a very warm morning to Shah Faisal. Thank you very much, Ali Yunus. And a very warm welcome to all the viewers, wherever you're watching this. Exciting day, the start of the domestic season. The first competition, the National T20 Cup. The openers are ready. The familiar figure of Sharjeel Khan alongside Saim Ayub will take to the field. This is the Sindh side, rather both the sides. Some household names here. Sindh, you look at that, Sharjeel. Saim Ayub made a good contribution towards the end of the last season with the white ball. Saud Shakil is the skipper. Quite a few new names. Sarfaraz Ahmed is also in there. Danish Aziz, Anwar Ali, Sohail Khan, Mir Hamza, Zahid Mahboob. Formidable bowling lineup. Absolutely. Both of the sides, very, very balanced sides. Southern Punjab includes Zain Abbas, Soeb Maqsood, the veteran, Zishan Ashraf, the left-hand batter, wicketkeeper, Salman Ali Agha, the captain, Shirun Siraj. I'm going to see him for the first time. Randhawa is also a very good all-round cricketer. Moinuddin also a new one. Samin Gul, Ali Majid Shah, another very exciting prospect. Faisal Akram and Mohammad Ilyas to make. Here are the openers for Sindh, Saim Ayub and Sharjeel Khan. And we all know what he can do if he stays on the pitch for a bit. And he would like batting on this pitch because the ball really comes onto the bat on this Rawalpindi pitch. Rashid Riaz, the officiating umpire, a very good umpire. He's been around for a long time here in domestic. Nasir Hussain, second official, officiating from the commentary box end as well. And this is where the proceedings will commence. Looks like it's going to be spin early doors for Southern Punjab. The wicket a bit tacky, not the usual Rawalpindi pitch that we see plenty of pace and bounce. This one looks rather slow, and it's at 9:30 start as well. You mentioned it's quite hot as well. Have a look at those numbers for Sharjeel Khan. What a strike rate, wonderful player. Along with him is Saim Ayub, still young at this level, but no shortage of talent and skill. The average will go up as he plays cricket. He's into his 8th game, 114 runs. Strike rate will go up also as he plays cricket. The best of 35 for Saim. He got an introduction into PSL quite early, but since, like I was mentioning, last year, towards the end of the season, he featured for Sindh in the Pakistan Cup. And in the semi-final, he really played nicely. Salman Ali Agha, freshly debutant for Pakistan in Test cricket and ODI. 36 matches, 23 wickets. He is a handy customer with the ball, and this is an exciting move already. Salman Ali Agha, captaining Southern Punjab at this level at T20 for the first time, alongside Saud Shakil. I'm really excited to see him as a captain. Saud Shakil, he's been a regular part of Pakistan Test side, but this will be a new challenge for him. In fact, both of the side, if you look at Sindh side, they've been 3 captains all in the side. There's Sarfaraz, there's Anwar Ali, there's Shan also in the side. He's not playing though, but he is in the side. On the other side, there is Soeb Maqsood, who's also captain Southern Punjab. Amir Yamin also in the side. We're just waiting for the things to just go smooth, so we can start off with the proceedings. It will be the off-spin of Salman Ali Agha to start off proceedings. 2 left-handers. Is that the reason, Shah Faisal? Coach Shahid Anwar and skipper Salman Ali Agha, they've come up with this plan to start off with the off-spin against the 2 left-handers. Salman Ali Agha to bowl the first delivery of National T20 Cup. Right on the target, as he always has been to left-handers. There is something definitely between these left-handers and right-arm off-spinners. They always find it difficult, ball leaving them, going away from them.
Shorter this time. Be interesting to see. There's not a lot of pace early doors in this pitch. Well, that was the assessment from both the coaches. And I had a chance to have a word with them early on. And Sharjeel, if you give him any time on the back foot, he can be lethal. It's a good start by Aga. The best thing is don't give him room and don't bowl him short. These are the two balls that he really looks for. Sharjeel Khan. Both the sweepers are on the onside. Four fielders in the ring on the offside. Sharjeel goes up and over. Long on his back, but won't be able to cut this off. First boundary of the tournament. Sharjeel off and running. Beautiful. He just chipped it over the head. There was a fielder at long on, but he timed it and placed it beautifully right between the two fielders. Have a look at that. Just a jab, just a chip. The placement was perfect, straight. The result also perfect. 4 runs for Sharjeel Khan. He's up and away. Again, wanted to hit forcefully. Lots of power, but timing not quite there by Sharjeel. Mid-off is up in the ring. He can go through and over offside. Wanted to give himself room. This is what the plan is clear. The intention is clear from Sharjeel. That's the end of the first over. It's 5 for none, Sindh. Start from Sharjeel. This is what we expect from him in this format. It's a formidable customer. He's got the range of strokes. Still, he possesses the range both on the offside and on the onside. Interesting to see pace in action from the far end, the grandstand end. And Sharjeel likes the ball to come onto the bat as well. Have to see how this wicket, because Southern Punjab, remember, they won the toss and they put Sindh in. And they were expecting for some early movement, or at least the ball not to come on as much as it would do in the afternoon after the sun baking down on it today. 35 wickets for Sameen Gul. Best of 3 for 20. He's been transferred to Southern Punjab. He represented Khyber Pakhtunkhwa in the last national T20. And now being transformed here, it has made this bowling line very solid of Southern Punjab. Remember, they've got a bowling coach with them in form of Izaz Shima. Irfan Fazil also there as a fielding coach. So he's got 2 fast bowlers helping him there. This one slip, point, cover, extra cover, mid-off in position. Sameen Gul. Oh, that's nicely bowled. Right on the money. Good carry. So wicketkeeper took the ball, fingers pointing up. It'll be interesting to see Sameen Gul's angle as well. He likes that in-swinger to the right-hander, leaving the left-hander. Zishan Ashraf took the ball above his chest, went always on the up. Now, that was a good carry. This is what we associate with the pitch of Rawalpindi. But you were there for the pitch report, Shah Faisal. It's not the usual Rawalpindi pitch that we've witnessed over the years. There's a change in color also. We'll continue talking about this. Oh, wonderful. Is there a appeal? There is an edge. Is there an edge? No, says Rashid Riaz. Maybe off the pad. The bat hitting the pad, maybe. That's what the noise was, according to Rashid Riaz, and he made a signal quite clearly. Sharjeel, as he was wafting at that, once again, that angle leaving him. And very closely, Sharjeel did hit the flap with his bat. Excellent decision. Rashid Riaz is a top umpire. And this is what he signaled immediately. Excellent call. Good carry. Very good carry. This is a good pitch. And fast bowlers are able to carry this sort of deliveries. It's definitely a good pitch to bowl on. And early in the morning, bowling first. Happy days. Salman Ali Agha would want to break this partnership early on. Get the wicket of Sharjeel Khan. Oh, nicely pulled. Very nicely pulled. Is it gone all the way? We'll have to wait for the umpire's decision.
one bounce, yes. It's one bounce and over the boundary line for 4. Second boundary rather for Sharjeel Khan. That's where he likes it. This is his area. Famous pivot on his leg and the raise of the right leg as well. We've seen this many times from Sharjeel. Signature stroke, up and away from the fielder. For a moment the fielder was interested, but it was away from him. And Sharjeel dealing in boundaries, as he does so often. Now we talk about the liveliness of the pitch. He would like batting on this pitch too when the ball comes onto the bat, because he's somebody who plays on the back foot, who likes hitting the ball through the line also. Sensible. That is what we want to see from Sharjeel. That's also the challenge for Samin Gul. Because of that shape that he gets away from the left-hander, he doesn't want to give room to Sharjeel. We look at Abrar, the mystery spinner, but also he doesn't want to get too straight, because Sharjeel can clip him off the front foot or hoik him off the back foot like he did a couple of deliveries ago. Very little margin of error there for Samin Gul. But this is what I'm excited about. I wanted to see Saim Ayub. Like I said, end of the last season, he ended it on a high, and see what he can do. There have been quite a few changes in Sindh side, starting from the coach, coming to the captain and the young batters. Oh, he's off the mark beautifully. That is fantastic. What a wonderfully timed shot by Saim Ayub to get off the mark with the boundary. That is sumptuous. Absolutely gloriously timed away. Very little effort there. Leg stump half volley, all right. But the grace and the poise, look at that. Just leaning into the stroke, the roll of the wrist. And away it went. Yeah, shorter one to Sharjeel Khan and a fuller one to Saim Ayub, bowling to their strength. That is not how you're going to take advantage of winning the toss and bowling first. You need early wickets. You don't want these batters to run away with the show. It's much better. It's a better end to the over. After 2, it's 14 for none. Talking about the changes, Shah Faisal, last year there was a different coach, different captain for Sindh. Basit Ali, former test cricketer, was a coach for Sindh, but now the change, it's been changed. Ghulam Ali, the new coach for Sindh, the new captain. There's a transformation in the Sindh side. How do you look at that? They freshen up things. They had quite a lot of experienced players in their lineup, so they're looking to the future now. And the exciting thing is that Ghulam Ali has been working with the second 11 for a couple of seasons, and he done quite well over there. There is a fielder. Will only be one. The intention is pretty clear. He's looking to give himself room and play it over that extra cover region. That's where he likes. That's where the fielders are, inside the circle. Another exciting prospect from Adalias at long on. Easily done again. Just eased it for one. Saim Ayub. This is a good partnership building for Sindh. This is what they want to see, these young batters coming to the party and scoring runs at this occasion. Talking about the changes, big call to leave out Khurram Manzoor, who's been an ever-present for Sindh. Again, this clever bowling by Salman Ali Agha. He's bowling it slow. He's not giving enough pace to play it through the line. Saw Sharjeel move. Clever bowling from Salman Ali Agha. There is a chance. There is a fielder. Oh, just falling short of him. For a moment, I thought it's gone straight to the fielder. You got to be very careful, because Salman Ali Agha doesn't turn the ball much. It didn't come on to the bat. Sharjeel was looking to hit on the up. He didn't go to the pitch of the ball. Saim Ayub this time. It's in the air. Away from the fielder. Again, living dangerously. Both of these. And there's a chance of a run out at non-strikers. Oh, he'll definitely go to the third umpire. He did dive, but it's going to be a close call. What were they doing? Saim Ayub got too anxious with Sharjeel. You always got to be careful when you're running between the wickets. He's not the one who will be going for quick twos.
Probably it wasn't easy too, but Sharjeel was in game and Saim Ayub was scrambling. Salman Ali Agha got to the position, but slightly late. I think Saim Ayub has made it. Oh, touch and go, is it? Oh, it's mighty close. Can't tell it right now. You got to give it to the batter. Got to give it to the batter. Have a look from a different angle. One frame he's out and the bails are in, and the next frame the bat is in and the bails are out of the groove. Mighty close. No zingers, but I think too close for comfort. I think benefit of the doubt should go to the batters, but I'm glad I'm not the third umpire. That's an early test for him. Saqib Khan, third umpire, has got a work to do early on in the morning. Good technique though from Saim Ayub. Full stretch. And not had been given, and rightly so. Good decision made. The benefit always should go to the batter. Got to be careful. This is a very young fielding side, the southern side, very fit side. It's a good start by Salman Ali Agha. He's a regular part of Pakistan test side now. Played few very handy innings as he bowls the last delivery of the over. Ah, that's up and over. Beautifully played for another boundary for Sharjeel Khan. That's his third of this inning. He was itching to go over mid-off. He had a couple of tries in this over earlier on. Couldn't time it, but on that occasion it was full enough and wide enough for him to just go through with the line. This time finds the middle of the bat. One bounce over. Sharjeel always putting the bowler under pressure, and this time in the slot for him. Third boundary of the innings for Sharjeel to finish off over number 3. 22 for 3. Very formidable side, this inside. Have a look at that bowling lineup. There's Sohail Khan, there is Anwar Ali, there is Mir Hamza. 3 very experienced. There's Zahid Mahmood, the leg spinner. Sarfaraz Ahmad also inside. Very formidable side, this inside. Very experienced side. And they're off to a very good start too. 22 for none after 3. Saud Shakil wanted 170. I asked him at the toss. They're well in course for that. Samin goal continuing. Looking for that big wind up there. Saim Ayub, I think he was looking to go over. He just checked his stroke at the last minute. And mix up in the last over. If you have a close look at Sharjeel, he's always ball watching, no intent. And almost sold his partner down the river. It took so much time to call it no. Well, look at in earlier, the first action replay, Saim Ayub almost pleaded him to go. Salman Ali Agha was also not in good position to take the throw in the first place. Oh, beautifully timed. That is excellent batting by Saim Ayub. The timing and placement has been perfect through the gap of 4. Gorgeous. Wasn't a half volley, but that angle of Samin goal allowed him to free his arms, hit through the line on the up. Just getting on top of the bounce, just roll of the wrist to get the ball square. Saim Ayub is looking in good order. Use of the wrist at the very last minute to find that gap between the 2 fielders square on the offside. In first inning, The toss. gotta be careful. You don't want to lose your shape hitting to hit the ball too hard. On each occasion when he's looked to time the ball, it really came off the middle of the bat, but he's trying to use that extra bottom hand to normally here. Oh, it's in the air. Again, falling short of the fielder. Not quite timing. And just what you said, ball not quite coming onto the bat is another example. The length was there, but the pace not quite there.
Sharjeel mistimed it. He's looking to go over mid-wicket like he does with his pull shot. Ball hurried on to him a little bit. Samin Gul, and he's bowling tight lines and lengths. He's causing trouble. But 3 boundary balls, though, is ruining his figures slightly. Beautifully timed. This will run away. Yes, it does. Another boundary for Sharjeel Khan. He's on a roll. More evidence of just timing the ball, caressing it, using the pace of the bowler. Try to use extra force. That ball is not going anywhere, but when you're timing the ball like Sharjeel did, waited on it very nicely, give himself just a little bit of room to create that gap for himself and timed it away. Yeah, a little predictable, Samin Gul, as if Sharjeel Khan was expecting this line and length. Just gave himself room and just timed it beautifully. He's looking dangerous. We all know what he's capable of, Sharjeel Khan. And again, oh, it's dropped in. Stayed in the air for a long time. It was a straightforward chance, went straight to the fielder. Made a mess of it. Zain Abbas there, the vice captain of Southern Punjab. It was an easy chance. You don't want to be missing out on these chances, especially if Sharjeel Khan is playing. And got a bit big on it. They don't come easier than that at this level. Zain Abbas normally feels that slip. He's a very safe pair of hands. But somehow he couldn't judge the pace on that ball. It went burst through his hands. Big let off for the big man. Foregone, 31 for none. What a miss. All the hard work, all the setup by Samin Gul being wasted. This is what I'm excited about. Ali Majid Shah, 30-year-old, just 1 wicket to his name, but he's a very exciting bowler. Bowl those quickish leg spins. Doesn't spin the ball much. But what happened in the last delivery of... We'll have a look at it again after the first delivery of this. Over by Ali Majid Shah from Kabirwala. He's starting off right on the money. It's in the gap. They will look to get to. Yes, they do. Easily done. Back up. Again, timing the ball nicely, Saim Ayub. Ali Majid rolled from the front of the hand, but this was the crucial moment in the game. Look at how big it got on Sharjeel. Couldn't control it. Zain Abbas cannot believe he spilled that one. He's really upset with himself, but that was easy as they come, Ali. It was short of one, but the pace. They got to be very careful against Ali Majid Shah. Bowl those quickish leg spins, but the ball doesn't turn much. It skids on usually. Interesting action as well. He made headlines when he played the National T20 for the first time. And since then, he's made good progress. It'll be exciting to see how this season goes for him. Because bowlers like him can make quick progress in this format. Oh, that's gone through the fielder. That is poor. Very ordinary work by the fielder there. Will earn another boundary for Sharjeel Khan. So catch going down, and now a straightforward fielding chance going through for a boundary. That's what Ali Majid will give you. Pace on the ball. He's bowling inside the power play. Look at that. Sharjeel freed his arms. Young Faisal Akram should have done better. No excuse for that. Oh, he's bowling him. That is what we were all expecting from Ali Majid Shah. He's just beaten the defense of Sharjeel Khan and got this big, big wicket for Southern Punjab. Zain Abbas will breathe a sigh of relief, but this was superb piece of bowling from Ali Majid. He was bowling them quick from the front of the arm. This time slightly slower.
And Sharjeel went through with the shot too early, just a little bit of break, and struck the middle stump, celebrates. This is a huge wicket. And Sharjeel, after bright and breezy knock, will have to take the long walk back. It's 38 for 1. Bin Yusuf, another very talented player from Karachi. Lot is expected of him. Very promising young batter. Hasn't really transformed his skill into performances yet, but he's got the potential. He's young, 23 years of age, still got time on his side. This is not his format, but he's been given an opportunity, and it will be a huge test for him. He's a very good conventional red ball opener, but this is a new test for him. Like I said, Sindh have looked to freshen up their side. Quite a few experienced players have been let go. Big opportunity for Umair bin Yusuf against the guile of Ali Majid. What a start for him. Straight away giving himself room. This is very good fielding by Salman Ali Agha. Leading by example, leading from the front. Lefty, lefty, lefty. More evidence. Whenever you're looking to time the ball, caress the ball, you're getting better results. Look at that. Slower in the air. Sharjeel played it all around it. Hits the middle stump. This is a big breakthrough for Southern Punjab. Excellent bowling. Oh, there's a chance at non-strikers. Made it easy. End of 5 overs. It's 39 for 1. Sindh. अच्छा आगाज किया सलमान अली आगा ने। उन्हें 2 ओवर्स में 13 रन दिए और अली माजिद को जब वो अपने एंड से लेकर आए मीडिया सेंटर एंड से तो उन्होंने चलता किया शर्जील खान को, जो कि डेंजर मैन हमेशा की तरह आज भी साबित हो सकते थे। उनका कैच भी गिरा था चंद गेंदें पहले, लेकिन उसका फ़ायदा मिला नहीं शर्जील खान को। मोहम्मद इलियास पवेलियन से आज पहली बार एक्शन में नज़र आएंगे। इस टीम के सबसे तेज़ बॉलर हैं। हसन अली आखिरी मौके पर उनको दुबई जाना पड़ा था क्योंकि वसीम जूनियर अनफिट हो गए थे, इसलिए इलियास पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। 5 फील्डर ऑफ साइड में रखे गए उनके लिए। ऐसी फील्डिंग करना होगी सदर्न पंजाब की टीम को इस मुकाबले में रहने के लिए। वो आज एक कैच गिरा चुके हैं, एक बाउंड्री कंसीड कर चुके हैं। शानदार फील्डिंग, एक बड़ा धचका लग चुका है सिंध को शर्जील की सूरत में। अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जिस तरह की सरफेस लग रही है बैटिंग कदरे आसान मालूम होती है। इस पे नपी तुली बॉलिंग करनी पड़ेगी सदर्न पंजाब के बॉलर्स को। ओह, शानदार शॉट, बिल्कुल दौड़ने की ज़रूरत नहीं और गेंद पल ही पल में पॉइंट बाउंड्री के पार पहुंच गई। टाइमिंग लाजवाब और प्लेसमेंट आ पाएगी थी उमैर बिन यूसुफ की। पेस का इस्तेमाल किया। बहुत ही उम्दा शॉट थी ये, कुछ ज़्यादा विट दी नहीं थी,
तकरीबन ऑफ स्टंप के करीब की गेंद थी और बहुत अच्छे तरीके से टाइम किया, हल्का से एंगल दिया ताकि पॉइंट के फील्डर को बीट कर सके। T20 अमूमन तौर पे छक्के चौकों की गेम ही जानी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल क्रिकेटिंग शॉट्स हैं उनकी अहमियत कई दफ़ा नज़रअंदाज कर दी जाती है। ये बहुत दिलकश स्ट्रोक था। ये गेंद फिर से करना पड़ेगी मोहम्मद इलियास को, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान अनफिट हो गए थे और उसके बाद पहला मैच खेल रहे हैं क्योंकि सीज़न की इब्तिदा है। और अच्छी इब्तिदा की उमर बिन यूसुफ ने इस सीज़न की। काफ़ी अरसे के बाद T20 सिंध की जर्सी पहनने का इनको मौका मिला है, तकरीबन 3 बरस के बाद। और इसमें कोई शुबा नहीं इनकी सलाहियतों में और पेस बॉलिंग को जहां तक खेलने का ताल्लुक है उसमें लेग स्टंप मिस कर जाती और अंपायर का ऐसा बिल्कुल ख्याल नहीं। हालांकि अपना बल्ला जो है वो शो किया था उमर बिन यूसुफ ने, लेकिन राशिद रियाज ने हाँ में हाँ मिलाई मोहम्मद इलियास के। पहली कामयाबी मोहम्मद इलियास की, अच्छी गेम थी, स्टंप्स को टारगेट कर रहे थे और ऑन साइड पे खेलना चाह रहे थे उमर बिन यूसुफ। और कह सकते हैं कि हल्का सा लेग साइड पे जा सकते हैं, लेकिन बेहतर फैसला अंपायर का, उनका ख्याल कुछ और था। दूसरा झटका। उमर बिन यूसुफ बदकिस्मत रहे, 5 रन पर उन्हें LBW आउट दिया गया। 44 पर 2 सिंध। यह के बाद दिगरे 6 रन के इजाफे में 2 विकेटें गिरी हैं, इसलिए कप्तान सऊद को मैदान में उतरना पड़ा। एक नए दौर का आगाज कर रही है सिंध की टीम। उनके नए कप्तान बने हैं सऊद शकील सरफराज अहमद की जगह पर, और नए हेड कोच ने जिम्मेदारियां संभाली हैं गुलाम अली ने बासित अली की जगह पर। बेशतर खिलाड़ी नए हैं, नौजवान टीम है सिंध की। एक स्लिप के साथ मोहम्मद इलियास आएंगे। ज्यादातर जो सिंध की टीम में बल्लेबाज हैं वो बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, इसलिए सलमान अली आगा को फील्डिंग में बार बार रद्दोबदल नहीं करना पड़ेगा। मरीना, और ये वो विकेट है उमर बिन यूसुफ की। थोड़ा सा एंगल कर दिया था बैट, और जिस तरह की स्विंग है मोहम्मद इलियास की, लग रहा था कि लेग स्टंप शायद मिस करे, लेकिन अनलकी रहा इस बार और कामयाबी हासिल की मोहम्मद इलियास ने। अच्छा पुल शॉट, फील्डर दौड़े दौड़े आए फैसल अकरम, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया सऊद शकील ने, जो पुल शॉट खेलने में हमेशा से ही एक्सपर्ट समझे जाते हैं। बड़ी अच्छी पोजीशन में आकर उन्होंने गेंद को खाली मैदान में दे मारा। इस तरह की लेंथ यहाँ पे जो है खास कारआमद नहीं रहेगी। अच्छा स्विंग मिल रहा है, आगे पिच करें, ड्राइव खिलाने पे मजबूर करें, वहीं पे फ़ायदा मिलेगा। स्पेशली जब बैटर नया आता है, ये एक फ्री भी शॉट्स मिल जाती हैं और सरफेस बहुत अच्छी है। जिस तरह की हमने शॉट्स देखी यहाँ पे, कुछ खास मुश्किल हो नहीं रही किसी भी बल्लेबाज को। काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं इस ओवर में। वाइड गेंद देखी गई, 2 बाउंड्रीज, विकेट। और प्ले के आखिरी ओवर में हमेशा ऐसा होता है। एक बार फिर मिस फील्डिंग सैन अब्बास की जानिब से। तो पावर प्ले में सिंध ने 2 विकेट गंवाकर 49 रन बनाए।
जी क्या जी रास्ता अंदर रहो रेडी रहना है देखना बने सर्कल पे प्लीज गो यस सेंटर माइंड राइट चरून बाउंड्री थोड़ी छड़ के तेरा राइट आर्म राउंड द विकेट तू 2 सेव करना ही सलमान अली आगा अपना दूसरा स्पेल करने के लिए आए हैं इस वक्त मीडिया सेंटर एंड से, और उसकी वजह यह है कि ड्रिफ्ट मिल रही है हवा की वजह से, ड्रिफ्ट मिल रही है। और उसके बाद अगर ये टर्न करते हैं तो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। अब तक अच्छी बॉलिंग की है नपी तुली, इस बार हवा दी, स्वीप शॉट नहीं खेल सके साइम। शर्जील के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मिक्स कर रहे थे, कभी एयर दे रहे थे, कभी तेज गेंद कर रहे थे। अच्छे सेंसिबल बॉलर हैं। इस बार इनवाइट किया कि क्रॉस द लाइन खेलने जाएं। यहाँ पे विकेट्स की ज़रूरत है, एक स्लिप अगर रख ली जाए तो उसमें कोई जायका नहीं। एक है घूमेगी एक ही रन यहाँ पर बन सकेगा। सलमान अली आगा हाल ही में ये गोल में टेस्ट मैच खेल कर आए हैं पाकिस्तान की जानिब से। वहाँ देखा गया था कि अपने स्पेल में ज़्यादातर गेंदें एक जगह पर नहीं गिरा पा रहे थे, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट के ये स्पेशलिस्ट हैं और इस बार विकेट लेने के बहुत करीब आ गए थे। लूज शॉट खेला अपनी बॉडी से दूर सऊद ने। एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलना चाह रहे थे, लेकिन विड्थ काफ़ी थी और हल्का सा एयर दिया था इस बार। लेंथ जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी कि इसको एक्स्ट्रा कवर उठा के मारते, थोड़ा सा चेस करने चले गए थे। शहीन की कप्तानी कर चुके हैं सऊद शकील, कप्तानी से कोई ज़्यादा अनजान नहीं है, काफ़ी सुधरे हुए कप्तान हैं, सुलझे हुए, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे नेशनल T20 में सिंध को लीड करना। ये अच्छा शॉट खेला और गेंद खुले मैदान में चली है। ऑफ साइड स्वीपर के लिए कोई मौका नहीं था। एक और चौका, इसी पर साइम ने 7वें ओवर का भी खात्मा किया 58 पर 2। फ्लाइटेड गेंद थी और दूसरे न्योते की बिल्कुल जरूरत नहीं थी साइम अयूब को। अच्छा पावर प्ले रहा और साइम भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। शर्जील ने बहुत अच्छी शॉट्स खेली, सरफेस बहुत अच्छी लगी, ख़ास मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा और ये बहुत दिलकश स्ट्रोक था, ऑफ द पैड्स खेला। ये चांस था यहाँ पे, अगर ले लेते तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी विकेट थी। अली माजिद बहुत अच्छी गेंद करते हैं नए गेंद के साथ, और ये दूसरा झटका मोहम्मद इलियास ने दिया उमर बिन यूसुफ की सूरत में। बाउंड्री छोड़ के जरा अली माजिद को एक ही ओवर के बाद हटा लिया है सलमान अली आगा ने। हालांकि उन्होंने विकेट हासिल की थी और नई गेंद जो है वही उनकी स्ट्रेंथ भी है। फैसल अकरम को जल्दी मुतारिफ कराया गया है पावर प्ले खत्म होने के बाद, जो कि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं। ये पाकिस्तान अंडर 19 के लिए वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं। उनका दूसरा नेशनल T20 कप है फैसल अकरम का। तो ये एक चैलेंज होगा लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ बॉलिंग करना नौजवान फैसल अकरम को, जिनसे बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान क्रिकेट को मुस्तकबिल में। रेडी रहना, रेडी रहना। जैसे जैसे इन्हें मैचेस मिल रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है कि कंट्रोल काफ़ी आ गया इनके पास, समझ के बॉलिंग करते हैं, अपनी फील्ड के हिसाब से बैटर को भी रीड करते हैं और एक जगह पे बॉल कराना शुरू हो गए हैं। चिप कर दिया इसे अपने फेवर्ड एरिया में। 2 फील्डर दौड़े दौड़े आए, लेकिन रोकना मुमकिन नहीं था। शानदार फुटवर्क, पैरों से काम लेना अच्छी तरह जानते हैं साइम अयूब। एक बार फिर बेअब कर दिखाया उन्होंने।
बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दे रहे सदर्न पंजाब को। हल्का सा खिंची हुई लेंथ थी लेकिन कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। विकेट से थोड़ा सा नीचे उतरे और कलाइयों की ताकत से ये चौका हासिल किया। भाई फील्डिंग जो है ये कुछ ज्यादा काबिल तारीफ रही नहीं सदर्न पंजाब की। एक कैच भी गिरा, इसके अलावा 12 हमने मिस फील्डिंग होते हुए देखी है दायरे के अंदर, जो कि टूर्नामेंट के शुरू में आप बिल्कुल इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इस बार तेज करने की कोशिश की फैसल अकरम ने। भी अच्छी गेंद थी, लेंथ भी अच्छी थी। लेंथ ऐसी नहीं थी कि पीछे जाके खेलते, पेस की वजह से बीट हुए। दूसरा नया चाहते हैं सऊद, लेकिन इसका मौका दिया नहीं मोइनुद्दीन ने, जो बाउंड्री लाइन से दौड़े दौड़े आए। सऊद के आने के बाद साइम कोशिश कर रहे हैं कि वो लीड रोल प्ले करें इस पार्टनरशिप में। सऊद एक ऐसे बैट्समैन हैं जो अपनी विकेट को ज़्यादातर अजीज रखते हैं, लेकिन गैप्स में खेलना जानते हैं। और ये ख़राब गेंद मुंह की खाना पड़ी। अगर आप लेग स्पिनर हैं, गेंद को ज़मीन पर नहीं गिराएंगे तो फिर मुखालिफ ऐसे ही पेश आएगा सख्ती के साथ। आखिरी गेंद थी और अच्छा फिनिश करना चाहिए था लेकिन नाकाम रहे। एक बार फिर फ्री हिट दिए साइम को, जो अच्छे खासे सेट हुए में, और ऐसी गेंदों पे तो कोई भी चौका या छक्का ही हासिल करने जाएगा। थोड़ी मुश्किलात का सामना है सदर्न पंजाब को। सोना नहीं है यार, शाबाश। भाई ऊपर आए हैं एक के लिए जान भाई, थोड़ा यार चलो। फैसल अकरम ने इनिंग्स का सबसे महंगा ओवर किया, जिसके बाद सलमान अली आगा अपना स्पेल मुकम्मल करने के दर पर हैं। दोनों ही टीमों के कप्तान नए, सऊद शकील भी और सलमान अली आगा भी। हसन अली दस्तयाब नहीं थे, इसलिए सलमान को ये बागडोर संभालना पड़ी आखिरी मौके पर सदर्न पंजाब की। अच्छा साल ये साबित हुआ है, मुबारक सलमान अली आगा के लिए टेस्ट कैप मिली, पाकिस्तान की जानिब से वनडे इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला, और अब सदर्न पंजाब की कप्तानी जो है वो दस्तार भी इनके सर पे सज गई। ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको आपके अंडर 19, आपके पाकिस्तान ए के प्लेयर्स, जो यंगस्टर्स हैं जिनको आप आगे फ्यूचर में देख रहे होते हैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, उनको पॉलिश करने का यही प्लेटफॉर्म्स होते हैं। वेल बॉल आगा, वेल बॉल। सिंध की टीम अच्छी पोजीशन में इस वक्त, सिर्फ 2 ही विकेटें उन्होंने गंवाई हैं। हमेशा एक शक होता है रावलपिंडी में, जब भी सुबह के वक्त आपको बैटिंग करना पड़े तो एक शुबा रहता है शायद ऑफ द सीम मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि ये वो पिच है पाकिस्तान में जहां पर हर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन की नई गेंद पर टेक्निक टेस्ट होती है। लेकिन अब तक अच्छी कारकर्दगी पेश की, पूरे एतमाद आगाज सिंध ने किया है इस सीजन का। 9 ओवर्स मुकम्मल हुए, 73 पर 2। इब्रार अहमद, ये भी एक उभरते खिलाड़ी हैं, अच्छे स्पिनर हैं, रीसेंट टाइम्स में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं। ये उनके साथ जीशान ज़मीर ये फिट हो गए हैं, ये भी अच्छी खबर है सिंध के लिए। रावलपिंडी की पिच हमेशा से पाकिस्तान में बाउंस के एतबार से सबसे आला समझी जाती है, फास्ट बॉलर्स की जन्नत ख्याल किया जाता है। इस पिंडी की विकेट को, और इस बार वार किया, फील्डर हैं पीछे, लेकिन लाजवाब कैच मोहम्मद इलियास, जो इससे पहले भी कई बार गैर मामूली आउटफील्ड कैचेस पकड़ चुके हैं, ये उन्हीं में से एक था।
एक लम्हे को लगा था जैसे शायद गेंद उनकी चोटी से निकल जाएगी, लेकिन उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। जंप की टाइमिंग लाजवाब रही। ये विकेट सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद इलियास के खाते में लिखी जानी चाहिए। नाकाबिले यकीन कैच। ये वो ब्लाइंडर्स हैं जो आप कह सकते हैं कि जिसमें आपका 50-50 चांस होता है, लेकिन एफर्ट करनी पड़ती है आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में। और ये बहुत बड़ा झटका। साइम अच्छा खेल रहे थे, 30 रन बना के उनकी वापसी होगी। 73, 3 खिलाड़ी आउट। साउद खान से पहले सरफराज अहमद को मैदान में उतारा गया है, जो कि इकलौते दाएं हाथ के बैट्समैन हैं सिंध की इस बैटिंग लाइनअप में। अच्छा खेल रहे थे साइम अयूब और फैसल अकरम के खिलाफ शॉट का इंतखाब भी उनका बुरा नहीं था, लेकिन उनके बदखा मौजूद थे बाउंड्री लाइन पर। मिसाली कैच बिलाशुबा ये इस टूर्नामेंट के बेहतरीन कैचेस में से एक माना जाएगा आगे चलकर भी। एक वजह यह भी हो सकती है सरफराज अहमद को नंबर 5 पर भेजने की कि इस वक्त स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं और स्पिनर्स के खिलाफ रन्स बनाने पर इनके मलका हासिल है। बहुत आला, वेल बोल, फैसल, बहुत आला। स्ट्राइक रोटेशन भी बहुत अच्छी करते हैं। और ये वो विकेट है। साइम ने शॉट की सिलेक्शन अच्छी थी, गेंद भी मिल गया था, लेकिन थोड़ा सा अगर एज दिया जाए इनको तो अगेंस्ट द विंड शॉट खेली थी, इसलिए ज़्यादा कैरी नहीं कर पाया, लेकिन कैच की दाद देनी पड़ेगी। और फैसल अकरम को भी शाबाश मिलनी चाहिए मरीना, क्योंकि पिछले ओवर में ये बहुत महंगे रहे थे, 11 रन देकर गए थे, इसके बावजूद आकर गेंद को हवा दी। घूमेगी घूमेगी ये शादी घूमेगी, सीधा रहो। ये भी इनकी दिलेरी जाहिर करता है कि इस फॉर्मेट में भी ये विकेट खरीदने को तरजीह देते हैं, घबराए नहीं है। लेकिन ऐसी फील्डिंग कारकर्दगी चाहिए। पाकिस्तान में अभी तक जो आउटफील्ड बाउंड्री कैचेस हैं, हमने उनका म्यार जो है वो इससे पहले इतना ऊंचा देखा नहीं था, लेकिन ये आगाज बहुत अच्छा कर दिया है मोहम्मद इलियास ने। एक है बिल्कुल, अभी तक जो फील्डिंग स्टैंडर्ड रहा है वो काफ़ी क्वेश्चनेबल रहा है, लेकिन इस कैच की वजह से आप देख सकते हैं कि सदन की टीम में एक अलग सी लहर आ गई है। और सरफराज अहमद पे काफ़ी जिम्मेदारी है अभी। ओवर बहुत पड़े, स्ट्राइक रोटेशन अच्छी कर सकते हैं। सऊद शकील भी रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी करते हैं। घूमेगी। एक और अच्छा स्वीप शॉट बहुत आला शादी। सरफराज अहमद का खासा है अली फील्डर बाउंड्री लाइन पर। तो ये उल्टे सीधे हाथ की पार्टनरशिप इस वक्त मैदान में जारी है सऊद और सरफराज के दरमियान। 76 पर 3। शादी से भाई बल देख के ठीक है। बॉडी छोड़ जरा। राइट आर्म ओवर द विकेट। अब शादी after a long time. And that's through. This will run away for 4. Yes, it does. This is Sarfraz special. He's up and going. 80 for 3 Sindh. Have a look at that.
realizing that the ball was on the shorter side, just timed it and placed it beautifully between those two fielders for a boundary. सोच के साजी आप भी बढ़ो एमे आओ शाबाश. It's again the case when you start thinking that you want 170 or 180 batting first, शाबाश शाजी. and then you realize that you lost too many quick wickets, and then plan B comes into play. Sarfaraz surely will rely on exactly what he's doing right now. A lot of strike rotation. He'll make you work in the field. And that's how probably the plan would be, that he will bat the overs around. It's good time for Sarfaraz to be batting here. Have a look at that. Just played it with soft hands, realizing that there was two available. The fielders are placed right onto the boundary line. This is excellent cricket. This is experience for you. Sarfaraz Ahmed शाबाश. coming into the bat at a very right time for Sindh. The spinners operating, and he knows how to deal with them. ओए वेल बॉल यार शाह. The average first inning score here last season is 163. Let's have a look at the last ball. That's from Majid. He will sometimes give you a seam-up delivery. Especially with the newer ones, he can be very tricky. The ball just skids through. चलो शाह जी. And that's his speciality. He hurried on to you, Ali Majid Shah. बॉलिंग शाह जी. Again, the quicker one. Just leaving the, angling the ball that way for the left-handed Saud Shakil. Quick arm action from Ali Majid. वेल बॉल यार. वेरी वेल बॉल. शाबाश. He's 8 for 1. Ali Majid Shah saw him for the first time against MCC. Played it for Lahore Qalandars there. That was the first time I witnessed him. We'll continue talking about it. 11 overs gone, 84 for 3 Sindh. Saim Ayub looked very good for 30 runs. Shajil Khan was dangerous to score 24 runs. Umair bin Yusuf couldn't score much. 5 runs he scored, and this is a very important partnership, Saud Shakil and Sarfaraz Ahmed. That's the first one to go. Again, closing the face of the bat too early. And then the slog sweep. That's a brilliant catch down there. We'll give 80% to the fielder for that wicket. That's in the air. He hasn't really completed the shot, but opened the face of the bat just to play it away from long off. Yeah, very sensible by Saud Shakil. He would time the ball all day long. Have a look at that. He's known for his timing. Just chipped it over that extra cover fielder. There was no one there easy to. That's a very good partnership. These two are the right men for Sindh at this moment. Singles won't stop. That is for sure. Zain Abbas dropped Shajil Khan early on. Sindh have got plenty of batting still to come. There's Danish Aziz, there's Anwar Ali, big hitters. 170 is what Saud Shakil was thinking at the toss. Probably they're well in course to get to that number. Outside edge, he's found the gap there. At least have a couple. Oh, in fact, it's gone all the way. That's a boundary. So it wasn't intended to play in that region. But it's just that thick edge helped it cross the boundaries. Just looking at how Southern Punjab have been operating. They came out with 3 seamers and 2 spinners, but Salman Ali Agha, as the part-time spinner, has utilized his off-spin against the left-handers especially. And he's finished off with his 4 overs, none for 26. So basically, in other words, they're using 3 spinners. Sweeping, that's his go-to shot, Sarfaraz. He'll get a boundary.
7 out of 10 times when he plays that. Yeah, that is his go-to shot. Feeling for the youngster. He's bowling to the probably the best player of spin in Pakistan, Sarfaraz Ahmed. Going around on one knee, placing it beautifully. There was no fielder there. That is why I said this is the right time for these two to be batting for Sindh. They play the spin very well. It's just the important thing, you know, usually sometimes when you want to counter spin, and especially when you're not reading the spin, the sweep is the safest shot if you can play it well. And you can extract the runs, that can become your release shot. But just coming back to how they're operating the Southern Punjab team, so they're basically going to utilize 12 overs of spin if they bowl all the 3 spinners. They've just bowled 2 overs in seam bowling, rest is 3 overs rather. Oh, that's gone, that's gone. Salman takes that catch. For a moment I thought that it just falls short. So getting a bit of extra bottom hand in that shot. And they lose the 4th, the captain has to go. Fielding making the difference for Southern Punjab. Second catch, another fantastic one. This time the captain Salman Ali Agha diving towards his right. Wonderful, this is what you want to see from all these youngsters, very fit cricketers. Disappointment, he knows the value of this wicket. He looked good for his 18 runs. His courtesy, brilliant catch by Salman, scored 18 runs off Faisal Akram. It's 9-6 for 4 Sindh. Another very talented player, Saad Khan from Hyderabad, is joined in Sarfaraz Ahmed, another left-hander in the side. 4th of the inning, probably Shajil Khan, Saim Ayub, Saad Khan and Saud Shakil. Danish is still to come. It's a team full of left-handers. No wonder Salman Ali Agha started off with himself, bowling off spins. Well, the pace on the ball will take it all the way to 3rd man. He's too smart for that. Just opening the face, Sarfaraz, and using the pace on ball. And not good bowling. Ali Madid Shahid kept things tight, but this time just giving him enough room. And we all know what Sarfaraz is capable of. Have a look at that. Played it with soft hand, played it late. The fielder inside, the fielder at 3rd is not quite square. That's better. Yeah, well, look at that for a catch again. It was traveling, went straight, timed the dive beautifully. Salman Ali Agha showing that he is different. He's played for Pakistan Test side. It's such a huge learning for all the other youngsters playing around him. They'll have a lot to learn from him, Salman Ali Agha. And I'm glad that he's been given the responsibility of captaining the side. In fact, both of the sides. Saud Shakil also. Very young captain, new one for Sindh. The surprising part for me from Southern side was leaving out Amir Yamin. I think he's probably one of the best all-rounders in Pakistan domestic circuit, and it must be a huge decision leaving him out. Yeah, there are quite few names who are not part of the national T20. And it's probably the way forward. We're looking at more opportunities for youngsters at the highest level. We talk about the
premier domestic tournament. Let's have a look at that shot. It was nicely driven. It's just about the timing of the dive, as you said, and also just a bit of luck that was required. The idea was right. He was eyeing that extra cover region every time, just opening the face. 101 for 4. They do need to get close to that 150 mark from here. We still have the overs. And batting to come, we'll have Danish Aziz, another left-hander. And then the bowlers who can hit a bit. End of the over. 13 gone, 102 for 4. Five bowlers used for Southern Punjab. Ali Majid, Mohammad Ilyas and Faisal Akram, the wicket takers. 2 for Faisal Akram, giving away 26 runs. It's a very good bowling lineup, this Southern side. No wonder they've left out Amir Yamin in that side. Talking about, you were saying that they should get to 150. I think, in my opinion, they should be looking to get 180 from here, considering the type of players that are still to come. Anwar Ali can hit big. Danish Aziz, we all know that. Another left-hander can go big. It's a very good balanced side, the Sindh side. Ilyas 1 over 1 for 10. Got rid of Saim Ayub. No, in fact, Umair bin Yusuf. He's going to come back now into the attack. If you just joined us this morning, Southern Punjab won the toss and decided to field first. Sindh have been somewhat struggling a bit, losing wickets at regular intervals. 102 for 4. Change of angle for the left-hander coming round the wicket. He's taken a brilliant catch, Ilyas, in the deep. He actually, as I said, 80% of the effort is the fielder rather than the bowler. It was a slog. And was a brilliant catch taken in the deep there. One-handed, and the awareness of where his feet are after that catch, the balance. Gets that and makes sure he does not step onto that rope. Superb effort. He's a very, very fit cricketer. Very good athlete, Mohammad Ilyas. Represented Multan Sultan in PSL. They rate him very high. It's a very energetic cricketer, Mohammad Ilyas. And you could tell the way he took that catch, the way he grabbed that ball, kept his eyes on the ball, jumped it to perfection. A very, very good person to have in your team. A very good team man he is. It's not a bad idea on this pitch. It's just keeping the ball within the stumps. It's not allowing them to work things around through the covers. Sarfaraz exactly probably thinking his work is cut out. He's got 6 overs to go after this. He wants to bat through, knowing that he has to place that platform for someone like Danish Aziz or Anwar Ali to come in and go for those 10 to 12 runs and over. The predictor says 154 if they carry on like this. But I still believe they should be able to get more than that. They should be eyeing on 170, 75. That will be called a wide. It was way high. Ilyas bending his back, giving some extra mile into it.
And that'll be wide any day. So important when you talk about the short ball. What's the purpose of it? If it's not a well-directed short ball, you'll probably end up bowling it again, or probably be hit. Where certain pitches allow the ball to just sit in front of your eyes nice and pretty if you don't have that pace, and if it's not well directed somewhere around the shoulder and the chin or into the rib cage, which just takes you by surprise. And then the purpose of that ball, what do you plan to do with it? You're trying to push the batsman back into the box if he's attacking you and then set him up. But just bowling a bouncer, an extra ball, an extra run. Well bowled, very well bowled, very well bowled. Yeah, but if you look at the history of Rawalpindi Cricket Stadium, it has always offered assistance to the fast bowlers. The pitch has been liveliest of all the pitches that I have witnessed in Pakistan. But this one is a little different. This one is a little on the slower side. Maybe they've rolled it enough for the T20 game. But that bounce that this pitch used to have, it's not quite there. And that's why we see those three spinners operating. Had it been the earlier pitch, the pitch we were used to of having here in Rawalpindi, we would see definitely more fast bowlers bowling from southern Punjab. But this is a different Rawalpindi pitch, on the slower side, made for T20 cricket. They're expecting some runs, and we are witnessing earlier when Shajil was playing, he looked really good until Ali Majid Shah got his wicket. Two is the call. These two can complete it, but the correct decision is the ball was already in the hands of the fielder. Well done by the fielder in the deep. Covered a lot of ground, Faisal Akram. 14 gone, 108 for 4. Yeah, nice use of the wrist by Saad Khan. Realizing he timed it too nicely, straight to the fielder. And this young side, this southern Punjab side is a very good fielding side, and we've already witnessed through some excellent catches, couple of them. 14 gone, 108 for 4. Very active. Salman Ali Agha is a regular feature of Pakistan Test side now, and one day also. And it's a good opportunity for him, being given the responsibility of captaining this side. I really like when these youngsters come up and take this responsibility and do well. And he's done well so far in this game. He's moved around his bowlers nicely. He's realized that there's not enough for the fast bowlers. Started off with himself, brought in Ali Majid Shah, Faisal Akram. He used them wisely. First over for Imran Randhawa. Comes into the action in the 15th. Sixth bowler in operation. Of course, it's a double header today. The first day of National T20. Balochistan will take on Central Punjab. Second game of the day. They'll come up. They're building up the crowd. They will come up in numbers. Today, the first day, first game. As this tournament goes deep, people will definitely come. All these big names in Pakistan cricket representing their regions. The next match here, because the double-header every day, is Central Punjab and Balochistan. But this ground home to the Northern. But we've seen lots of support for Central Punjab here as well. If you go to here, wicketkeeper is just advising the fielders on the boundary line just to be active, just be on a start-up. Maybe 3 or 4 steps inside towards the batters, because they're running well. They will run well.
Again, intentions pretty clear. They want every run. The very fit-looking Sarfaraz, he runs well. He knows, he realizes where the singles are, where the twos are available. That's what you want to see. Judging the runs. Lucky he got that inside edge onto the pad. Saad Khan. This ground has taken and seen a lot of cricket here, especially T20s, 160 games before this. National T20, 134 matches before this. Randhawa is a good player to have in your side because he provides you so much flexibility. As a captain, you can depend on him with the bat later on down the order. He's flexible to bowl the older one and also can be very good in the death overs. Bowling is first. And nowadays, the fast bowlers have made friendship with the fact that lots of teams opt for spinners with the new ball. You go into the back in the day of Wasim Akram Bakar, you'd say if spinner will bowl a new ball, they'll probably stare at you. But now things have changed. Strategies have changed. Formulas have changed. And it started working as the field setting for the right-handed Sarfaraz. With one ball to go in the over. On the legs, and he just turns around and puts it away for 4, ending the over with a boundary. 115 for 4 after that. ठीक है पीछे ना जा बाउंड्री छड़ के रह सरफराज अहमद टॉप स्कोरर हैं 30 रन के साथ। साद खान उनके साथ हैं। पिछले 2 सीजन्स में बहुत रन्स बनाकर आए हैं सेकंड 11 से और गुज़श्ता बरस कायदे आज़म ट्रॉफी में भी बहुत ही आला खेले थे। इस शॉट की तरह लाजवाब हिट बिल्कुल फ्लैट बैट से आई और इससे सीधा शॉट नहीं हो सकता जो साद ने कर दिखाया। पहला छक्का इस टूर्नामेंट का साद खान T20 पर अपना डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उन्होंने बॉलर को खातिर में नहीं लाए, अपने आप को रूम दिया और फ्लैट बैट के साथ स्ट्रेट। बड़ा अनयूजुअल शॉट होता है, लेकिन एरिया उनके माइंड में था और कमाल का शॉट है ये, पल्ले के बिल्कुल बीचों बीच से। ये वाइड हो जाएगी। आज ज़्यादा जो इजाफी रन्स हैं वो दिए नहीं हैं। ये दूसरी वाइड गेंद है इस इनिंग्स की। पहली भी मोहम्मद इलियास ने ही की थी, जो कि हम समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं और इस वक्त क्योंकि थर्ड मैन डीप है तो वाइड यॉर्कर का भी इंतखाब करना चाहेंगे। जिस तरह के इरादे जाहिर किए हैं साद खान ने, प्रेशर वापस बॉलर पे डाला और इसीलिए इलियास अब राउंड द विकेट आ रहे हैं। फाइन लेग सर्कल के अंदर हैं, थर्ड मैन पीछे हैं। लेग साइड में खेला, 2 की आवाज दी है और ले जाएंगे 2। साद खान जो कि बहुत ही फुर्तीले हैं और तेज कदम भी साबित हुए। अच्छी क्रिकेट, शानदार क्रिकेट यहाँ पे साद खान की। जो हम पहले बात कर रहे थे कि सिंध की टीम को फ्रेशन अप किया है इस साल
और साद खान जैसे प्लेयर्स को जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन अब उनका T20 डेब्यू हुआ और बिल्कुल भी किसी प्रेशर में नज़र नहीं आए। यहाँ इनके कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस किंगडम वैली नेशनल T20 के पहले मैच में। सिंध का मुकाबला सदर्न पंजाब। अब स्कोर उस रेंज में यहाँ जाता जा रहा है जहाँ पे सिंध की टीम चाहेगी कि अच्छे से इसको फिनिश करे, और जो 160-170 सऊद शकील ने जिक्र किया था टॉस पर, वहाँ तक पहुँचने के पोजीशन में आते जा रहे हैं इस पार्टनरशिप के साथ। जी और वहाँ तक पहुँचना भी पड़ेगा क्योंकि ये चेज फ्रेंडली वेन्यू समझा जाता है T20 क्रिकेट में, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। अच्छी डिलीवरी थी, इस बार सरप्राइज किया साथ को, जिनने अपर कट के मुतालिक सोचा लेकिन देर से। और ये अच्छी हिकमत अमली भी है इस पिच पर। बॉल को पिच में आप पटखेंगे तो बॉल उस तरह आ नहीं रहा जिस तरह रावलपिंडी की पिच का खासा होता है। सीजन का पहला मैच है, काफ़ी बारिशें हुई हैं और काफ़ी अंडरनीथ जो पिच के काफ़ी मॉइस्चर भी है और होता है ये इस पिच का खासा और इस इलाके का भी, क्योंकि यहाँ काफ़ी बारिश होती है। काफ़ी आपने देखा बॉल बिल्कुल भी नहीं आया, स्लोअर बाउंसर था। अच्छी वेरिएशन इलियास की। 163 वो औसत स्कोर है पिंडी की पिच पर T20s में। फुल टॉस का फायदा नहीं उठा सके, एक बार फिर हैरान रह गए। यॉक करने की कोशिश की थी मोहम्मद इलियास ने। 18 में से 12 मैचेस जो हैं वो बाद में बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते थे। ये गुज़िश्ता बरस के टूर्नामेंट का हवाला है। उससे पहले 2020 के टूर्नामेंट में भी हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे और ज़्यादातर टीमें जो हैं वो बाद में बैटिंग करके जीती। फुल टॉस थी, एंगल के साथ इसको मैनेज नहीं कर सके साथ। अच्छा मौका था रन्स बटोरने का लेकिन चूक गए। फुल टॉस लेकिन गैप में नहीं खेल सके। तो ये जो दोनों टीमें हैं सिंध और सदर्न, ये जब से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया निज़ाम मुतारिफ कराया है 6 टीमों का, ये हर बार सेमीफाइनल में पहुंचती रही हैं T20s में, लेकिन सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी। इसलिए नया खून शामिल किया गया है सिंध में। नए कप्तान हैं और आप देख सकते हैं ये नए मैनेजर हैं इनके। ये सुहेल मज़हर एक ज़माने में ये हबीब बैंक के ये हेड ऑफ स्पोर्ट्स से। सऊद शकील नए कप्तान बने हैं। गुलाम अली हेड कोच हैं जो पाकिस्तान के फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन। रफ्तार में तो बदल किया और विद द स्पिन नहीं खेला 1 रन के लिए सरफराज अहमद ने। काफ़ी तवील ओवर रहा ये मोहम्मद इलियास का। 3 ओवर्स में उन्होंने 26 रन दिए, 126 पर 4। खतरख्वाह पार्टनरशिप नजर नहीं आई। टॉप ऑर्डर पे स्टार्ट जरूर हासिल किए शर्जील और साइम अयूब ने, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर सके। सऊद शकील भी रन बॉल इनिंग्स खेल सके मिडिल ओवर्स में, लेकिन अब सरफराज अहमद की जो इनिंग्स है ये काफ़ी अहमियत की हामिल है। 31 रन बनाए हैं 24 गेंदों का सामना करके। साद खान, दानिश अजीज और अनवर अली जैसे पावर हिटर्स हैं। सुहेल खान भी लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 4 ओवर्स का खेल बचा है। जी हाँ, दानिश अजीज जो हैं उनको भिजवाया जाएगा इस इनिंग्स के डेथ ओवर्स में। वही स्पेशलिस्ट हैं। सलमान अली आगा ने बड़ा अच्छा स्पेल किया, 4 ओवर्स में सिर्फ 26 रन दिए। अली माजिद का 1 ओवर बाकी है, अपना दूसरा ओवर करेंगे इमरान। और मिस फील्डिंग, 4 रन बन जाएंगे। खराब क्रिकेट। सलमान अली आगा एक बहुत ही अच्छा कैच ले चुके हैं, लेकिन कई मौके पर उनकी टीम की जो फील्डिंग है उसने सर निगू किया है पूरी टीम का। जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल रेगुलेशन स्टॉप था। बॉडी को गेंद के पीछे लाना चाहिए था। लो फुल टॉस, सरफराज ने अपने आप को रूम दिया, लेकिन सीधा फील्डर के पास। बॉलर मायूस होंगे
इस लेट स्टेज पर जब बैटर्स ट्राई कर रहे हैं कि वो ज़्यादा रन्स बनाएं, उन्हें अपने फील्डरों की भरपूर सपोर्ट चाहिए होगी। बिल्कुल स्क्वायर के कोने पर लेकिन फील्डिंग कर रहे थे। कभी कभार ऑकवर्ड बाउंस होता है यहाँ पर। और इस बार अच्छा सिंगल, क्या ये पिंच कर सके हैं? यहाँ ऐसा लगता है कि पहुंच गए हैं अपनी क्रीज में, क्योंकि बहुत तेज हैं साद खान और अच्छा बैकअप भी कर रहे थे। साद खान ने ही कॉल की। सरफराज कुछ देर के लिए देख नहीं सके कि बॉल कहाँ गई। अंपायर ने थर्ड मैन की तरफ जरूर रुजू किया है। देखें, सरफराज को आइडिया नहीं था, लेकिन साद खान की अच्छी क्रिकेट और फिर डाइव लगाकर उन्होंने, लगता यही है कि अपने आप को महफूज कर लिया। अच्छी क्रिकेट थी रंधावा की जानिब से भी, लेकिन यही वो तब्दीली है जो सिंध की टीम में नजर आ रही है। पिछले सीजन में हमने देखा था कि उनकी जो रनिंग बिटवीन द विकेट और आउट क्रिकेट, उनकी फील्डिंग जो है वो काफी मायूस कुन हुआ करती थी। स्किल्स तब भी बेहतरीन थी। अच्छा शॉट खेला, लाजवाब फुटवर्क इस बार। नीट क्रिकेट साद खान की जानिब से बड़ी दलेरी के साथ कदमों का इस्तेमाल किया इमरान रंधावा के खिलाफ और मिड ऑफ के फील्डर को भी जल्दी मात दे दी। लगता नहीं कि वो अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल बेखौफ खतर चार्ज किया। ज्यादा बल्ले के बीचों बीच से नहीं हासिल कर सके वो टाइमिंग, लेकिन क्योंकि गैप था और मिड ऑफ भी सर्कल के अंदर था, इसलिए 4 रन हासिल कर लिए साद ने। पार्टनरशिप मजीद प्रोग्रेस करती हुई 39 सिर्फ 27 गेंदों पर। उठाकर खेला, फील्डर क्या ही ले लेंगे और इलियास ऐसी गलतियां नहीं किया करते कि बैट्समैन को दूसरा मौका मिल जाए। लेग साइड में उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन कमजोर शॉट साबित हुआ। साद जो बाउंड्रीज की मदद से रन्स बनाना चाह रहे थे, उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर से उठाकर खेलना चाहा, लेकिन मिड ऑन को क्लियर करने से कासिर है। हार्ड लेंथ पर टाइमिंग हासिल करने में काफी मुश्किलात हुई बैट्समैन को बड़े शॉट खेलते हुए, और यही कुछ साद के साथ भी हुआ। अपने डेब्यू पर 13 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए सिंध 135 पर 5। अनवर अली है नए बैटर। स्टेज सेट है एक कैमियो के लिए यहाँ पर। अनवर अली काफ़ी मशहूर जाने जाते हैं इस तरह की सिचुएशंस में खेलने के लिए। ज़्यादातर उनका एरिया जो है वो मिड विकेट का है। स्ट्रगल किया है बैटर्स ने उस एरिया में खेलते हुए। ज़्यादातर सीधे बल्ले से ज़्यादा कामयाबी मिली है बल्लेबाजों को। दानिश अजीज से पहले मैदान में उतारा है अनवर अली को, जो कि अच्छे ऑलराउंडर हैं। दानिश अजीज ये स्पिन बॉलिंग के ऑलराउंडर हैं, ये पेस के ऑलराउंडर हैं अनवर अली। ज़्यादा फिट क्रिकेटर्स का इंतखाब किया है सिंध ने, ये अच्छा लग रहा है इस टीम को देखकर। जिस तरह अच्छी रनिंग देखने में आई, वो बड़ी पार्टनरशिप नहीं हो सकी। ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी इस इनिंग्स की, जो 39 रन पर ख़त्म हुई इलियास के कैच के जरिए। देखा बाउंड्री लाइन से कम से कम 15-20 गज अंदर ये बॉल फिनिश हुई। पूरा जोर लगाया था, लेकिन क्योंकि टाइमिंग नहीं थी इसलिए साद खान को अपनी विकेट से हाथ धोना पड़ा। सिंध के बॉलर जरूर देख रहे होंगे कि इस विकेट पे कौन से हरबे कारगर रह सकते हैं। एक कटर खासा बाउंस मिला, विकेट कीपर जीशान इसे नहीं ले सके। ग्लव्स में 2 विकेट कीपर्स दस्तयाब हैं। जीशान आज कीपिंग कर रहे हैं, मोइनुद्दीन नहीं। वाइड बॉल का भी इशारा किया अंपायर ने, काफी बाहर थी। सरफराज ने आखिरी वक्त पर स्ट्रोक अपना चेंज किया और इसको रैंप करना चाह रहे थे, लेकिन बिल्कुल पेस से डिसीव हो गए। अच्छी कॉल अंपायर नासिर हुसैन की। थोड़ा सा मायूस नजर आया रंधावा, लेकिन फेयर इनफ कॉल थी।
कटर्स ने परेशान किया है आज बैट्समैनों को इतनी आसानी के साथ उस लेंथ को, खासतौर पर पेस को समझने में दुश्वारी रही है। 138, 5 खिलाड़ी आउट सिंध। सुबह काफी हब्स था, लेकिन अब अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। किंगडम वैली नेशनल T20 टूर्नामेंट, पहला मैच, पहला दिन, और विकेट को देखते हुए, और तारिक से पूछूंगा कि सिंध की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको देखते हुए भी एक कंपेटिटिव टोटल तक पहुंच सकती है अभी भी सिंध की टीम। सुहेल खान, मीर हमजा, अनवर अली, जाहिद महमूद की मौजूदगी में इस थोड़ी सी स्लो और स्लगिश विकेट पे अच्छा मुकाबला होने की तवक्को है अगर सिंध इन 3 ओवर्स का अच्छा इस्तेमाल कर ले। यहाँ सिंध के जो बॉलर्स हैं वो इनकी बैटिंग लाइन की निस्बत ज़्यादा आजमूदाकार हैं। मीर हमजा, सुहेल खान, दानिश अजीज़ बॉलिंग कर सकते हैं। जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर हैं वो विकेट टेकर्स में शुमार किए जाते हैं। रुमान रईस बदकिस्मती से वो शुरू में दस्तयाब नहीं है, उनके पाँव में चोट आई है। पिछले साल सबसे ज़्यादा विकेटें ली थी सिंध के लिए रुमान रईस से, 12 विकेटें। इसके अलावा जीशान ज़मीर भी इनके बेंच पर हैं। बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट थे, PSL में नजर आए लेकिन बदकिस्मती से इंजरी का शिकार हुए। 3 स्वीपर ऑन साइड पर हैं और 2 ऑफ साइड पर, लेकिन अभी भी देखा बड़ी शॉट्स खेलने में बैटर्स कामयाब नहीं हुए इस पिच पर अभी तक। जो ऑन दी अप, जिस तरह ऑन द राइज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच पे शॉटें लगती हैं टूर्नामेंट के पहले दिन, आज हमें नजर नहीं आई। यहाँ उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा एक आध मैच का। अच्छी रनिंग, दूसरा रन मिल गया जो खतरे से खाली नहीं था। थ्रो अगर सीधी लगती अली माजिद की तो सरफराज अहमद को शायद लौटना पड़ता। कश्तियां जलाकर वो भागे थे। ये भी बॉल टाइम नहीं हुआ, लेकिन सरफराज ने पहला रन स्लो लिया, लेकिन अनवर अली के जहन में कोई शक नहीं था और सरफराज ही स्ट्रगल कर रहे थे। डायरेक्ट थ्रो, बिल्कुल आपने सही कहा, सरफराज को जाना पड़ता लेकिन बॉल विकेटों में नहीं लगी। यार शायद अंपायर जो नासिर हुसैन है वो यहीं आउट दे देते सरफराज अहमद को, लेकिन ये एक ऐसा वक्त है जहां आपको अपनी विकेट से ज़्यादा टीम के जो रन्स हैं उनको अहमियत देना होती। बल्ला तब्दील करने की ज़रूरत है। सरफराज अहमद अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। 27 गेंदों में 37 रन उनने बनाए हैं। अच्छा बैटिंग रिदम नज़र आया है। टॉप स्कोरर हैं इस इनिंग्स के। ये जो विकेट है ये भी कही जा सकती है उनके मतलब की है बैटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर 10 या 12 का जो रन रेट है वो मेंटेन करना मुश्किल है, लेकिन सरफराज की खासियत है वो बाउंड्री भी ढूंढ निकालते हैं और फिर विकेटों के दरमियान रनिंग तो उनकी है ही शानदार। ये अच्छी डिलीवरी, अच्छी हार्ड लेंथ को हिट किया समीम गुल ने, जो आज इब्तिदा में ज़्यादा पुरएतमाद होकर बॉलिंग नहीं कर रहे थे। सीज़न का पहला मैच था, इतना अच्छा रिदम भी नहीं रहा, लेकिन अब फील्ड पर तकरीबन 1 घंटा गुजारने के बाद वो रिदम आ रहा है वापस। ये तीसरी टीम है पिछले 3 बरस में समीन गुल की। पहले केपी के लिए खेले, फिर सेंट्रल पंजाब और अब सदर्न पंजाब का रुख किया है समीन गुल ने। थोड़ा सा लग रहा है कि अपनी फिंगर्स को जो रोल कर रहे हैं लेग कटर के ऐसे अंदाज में समीन गुल, और जो हार्ड लेंथ पे जो बाउंस है थोड़ा स्पंजी सा बाउंस है, और अनवर अली बिल्कुल भी उसको समझ नहीं पा रहे अभी तक। अच्छी इंटेलिजेंट बॉलिंग कर रहे हैं समीन गुल। ऐसा लगा कि लेग कटर के ऐसे अंदाज में उन्होंने अपनी पेस कम नहीं की। शायद क्रॉस सीम ऐसा है कि उस पे बॉल प्रेडिक्टेबल बाउंस नहीं है। गिने चुने हैं अभी
तमाशाई मैदान में, लेकिन पिंडी का खासा है, यहाँ पर आते हैं तमाशाई देखने के लिए एक्शन। अंपायर ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी इस बार। राशिद रियाज ने अच्छे अंपायर्स में शुमार किए जाते हैं, आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल का हिस्सा है पाकिस्तान की जानिब से। ये बल्ला लगा था ज़मीन पर बिल्कुल, और अनवर अली और समीन गुल के दरमियान कशमकश चल रही है। पिछली 2 शॉर्ट पिच गेंदें करने के बाद अनवर अली फिर क्रीज में डीप गए, लेकिन इस मरतबा यॉर्कर का इंतखाब किया समीन गुल ने। अनवर अली ने अभी तक बल्ले के बीचों बीच गेंद खेली नहीं और वक्त जो है वो बीता जा रहा है। ऐसा लगता है 13 गेंदें सिर्फ रह गई हैं इस इनिंग्स में। यहाँ थर्ड मैन के फील्डर को फैसल अकरम को दायरे में लाया गया, मिड ऑफ को पीछे हटा दिया गया बाउंड्री पर। क्या फिर स्लो डिलीवरी करेंगे और सरप्राइज किया लेंथ के जरिए, और यहाँ कैच आउट हो गए। आला कैच पीछे की जानिब गए। शारून सिराज जो नौजवान क्रिकेटर हैं, बहुत ही अच्छे बासलाहियत बैट्समैन हैं और फील्ड में भी उन्होंने अपनी सलाहियतों का खुलकर इजहार किया। बैकवर्ड दौड़ते हुए बड़ा उम्दा कैच लिया अनवर अली का। बिल्कुल रिदम में नजर नहीं आया, लेकिन क्रेडिट समीन गुल को, एक मरतबा फिर उन्हें डिसीव किया लेंथ से और अपनी पेस से। शारून सिराज की बहुत ही जबरदस्त टेक्निक, पीछे जाते हुए हमेशा साइडवेज भागना चाहिए ताकि आप गेंद पर नजर रख सकें, और अगर आपको स्ट्रेच करना पड़े तो आप दूर तक बॉल को पकड़ सकते हैं। और यही किया शारून सिराज ने। अनवर अली की इनिंग्स का खात्मा उनके हाथों। 3 रन बनाकर आउट हुए सिंध 141 पर 6। सुहेल खान नए आने वाले बैट्समैन जो कि लॉन्ग हैंडल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दानिश अजीज को स्पेशलिस्ट फिनिशर ख्याल किया जाता है, लेकिन गुलाम अली ने ज़्यादा एतमाद अपना जतलाया है सुहेल खान पर। फास्ट बॉलर्स के खिलाफ अच्छी हिटिंग करते हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता था अगर दानिश आते, लेकिन गुलाम अली ने फैसला लिया। देखते हैं ये कैसा साबित होगा, क्योंकि सुहेल खान ही स्ट्राइक पर हैं इस वक्त। 19वें ओवर के आगाज़ पर इलियास ने अच्छा स्पेल किया, अभी तक सिर्फ 26 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया है। माजी में डेथ ओवर्स में स्ट्रगल किया है इलियास ने, अगर उन पर अटैक किया जाए। यहाँ अलबत्ता इस मैच में बार बार वापसी की है, विकेटें लेकर उन्होंने सिंध की टीम को कहीं भी अपनी पहुंच से बाहर नहीं निकलने दिया। तो 6 विकेटें हासिल की हैं सदर्न पंजाब के बॉलर्स ने। आगा सलमान ने अच्छा कंट्रोल किया है इस मुकाबले को। इस बार खासा आगे निकल गए थे और सोहेब मकसूद ने रन आउट करने की कोशिश की। जब विकेटें गिरती हैं वाइट बॉल क्रिकेट में तो फिर जो प्रोग्रेस होती है या पेशकदमी, उसमें इतनी तेज़ी आती नहीं है बैटिंग टीम की। और ये शारून का काबिल तारीफ कैच, ये अच्छे क्रिकेटर हैं शारून सिराज। तारिक, बिल्कुल आपने सही कहा, सलमान अली आगा ने बहुत ही मुतासिर कुन आज कप्तानी की है और आखिरी 2 ओवर रहते हैं, लेकिन जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं उनके पास काफ़ी सारे अवेलेबल थे और यही एक निशानी है कि बिल्कुल मुकम्मल कंट्रोल में नज़र आया आज। ये एलबीडब्ल्यू आउट हो जाएंगे। अंपायर देर आयत दुरुस्त आयत, स्टंप स्कैन सामने थे इसलिए बाजी मार ली मोहम्मद इलियास ने। विकेट टू विकेट बॉलिंग करने का उनको सिला मिल गया और सिंध को एक और नुकसान उठाना पड़ा। 6 रन्स में ये तीसरी विकेट गंवा दी। सुहेल खान से ज्यादा काबिल और अहल बैटर सिंध के इस अंदाज में खेलने में नाकाम रहे हैं इस रावलपिंडी की पिच पर। सुहेल खान ने कोशिश जरूर की
लेकिन गेंद और बल्ले का मिलाप नहीं हुआ। बगैर स्कोरर्स को जहमत दिए 2 रन बनाकर आउट हुए। विकेटें गिरने का सिलसिला मुसलसल जारी है। सिंध 141 पर 7। सदर्न पंजाब की टीम ने यके बाद दीगरे विकेटें हासिल की हैं। दानिश अजीज को नंबर 9 पोजीशन पर आज खेलने भेजा गया। 3 मिस सेंचुरियां बनाई हुई हैं। अब तक की सूरत हाल से सदर्न पंजाब की टीम बेहद खुश होगी। उन्हें किसी भी बैट्समैन को बहुत ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है। कोई बड़ी पार्टनरशिप देखने में नहीं आई। 39 से एक भी पार्टनरशिप आगे नहीं बढ़ सकी और यहाँ तो 1 रन की भी पार्टनरशिप नहीं हुई। सवालिया निशान जरूर उठेगा गुलाम अली के इस फैसले पर। पहले अनवर अली को भेजा, 6 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाए, और सोहेल खान 2 गेंदों पर बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। 8 गेंदों पर 3 रन आए आखिरी 3 ओवर्स में। यहाँ पे ज़रूर सवालिया निशान उठाया जाएगा कि कोच गुलाम अली की क्या हिकमत अमली थी दानिश अजीज को पीछे रोककर। ये अच्छा पुल शॉट है लेकिन रन एक ही मिलेगा। शारून थे मिड विकेट बाउंड्री पर। सदर्न पंजाब के साथ हमेशा से ये मसला रहा कि डेथ ओवर्स में उनके बॉलर्स बहुत ज़्यादा रन्स दे दिया करते थे। कई इनने जीते हुए मैचेस आखिर में आकर हारे। इनकी बॉलिंग को हमेशा से कसूरवार ठहराया गया, लेकिन आज सिंध के इस ड्रेसिंग रूम की मुश्किलात में डेथ ओवर्स में ज़्यादा इजाफा किया है इनके बॉलर्स ने। देखिए परेशानी यहाँ है इन चेहरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मैच की क्या सूरत हाल है। उठाकर खेला है, एक बार फिर मौका है। फील्डर तैयार हुए और सलमान अली आगा ने ये हाई कैच ले लिया। बहुत जल्दी बहुत बड़ा शॉट खेलने चले गए दानिश, और इस तरह ये विकेटें गिरने का सिलसिला अब तूल पकड़ रहा है। सिंध की टीम ऑल आउट होने के खतरे से 2-4। एक बार फिर हार्ड लेंथ को हिट किया इलियास ने और उसी पर कामयाबी उनका मुकद्दर ठहरी। काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर आते ही पेस को फोर्स करना इस विकेट पे। ज़्यादा बेहतर होता कि सरफराज को स्ट्राइक देते, लेकिन दानिश अजीज ने कोशिश की और 1 रन बनाने के बाद आउट हुए। मुसलसल सिंध की विकेटें और इनिंग्स बिल्कुल कोलैप्स करते हुए 143 फॉर 8। मीर हमजा है नए आने वाले खिलाड़ी। सिंध की कप्तानी कर चुके हैं पाकिस्तान कप में। पिछले सीजन के इख्तिताम पर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की थी इनकी क़यादत में सिंध की टीम ने। 1-2 अच्छी हिटें तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन अब सरफराज के पास स्ट्राइक आई है। सिर्फ 7 गेंदें बची हैं। देखते हैं कि क्या
अच्छी बॉलिंग फॉलो किया सरफराज अहमद को, जो ऑफ साइड में शॉट खेलने के लिए जगह चाहते थे। बड़ी लाजवाब बॉलिंग की मोहम्मद इलियास ने, बहुत ही उम्दा कमबैक किया। शुरू में वो पिट गए थे और ये अभी उनने एक और विकेट हासिल की। कैचेस अच्छे लिए हैं सदर्न पंजाब के खिलाड़ियों ने। खुद इलियास ने इसका आगाज़ किया था बाउंड्री पर, जब उन्होंने साइम अयूब को पकड़ा। कैचिंग बहुत शानदार रही है। कप्तान सलमान अली आगा ने भी जो कवर में सऊद शकील का कैच किया, वो भी काफ़ी अहमियत का हामिल था। सऊद शकील 18 गेंदें खेल चुके थे और लग रहा था कि शायद वो अपने स्ट्राइड में आएँ और इनिंग्स को आगे की तरफ लेकर जाएं। वो इस तरह के प्लेयर थे इस विकेट पे जो बॉल को टाइम करके खेल सकते हैं, तो इस लिहाज से वो कैच भी बहुत अहमियत का हामिल था। सामीन गुल, इनको गेंद सौंपी गई है आखिरी ओवर करने के लिए। ये शॉट जो है इतना ज़्यादा 12 ओवर साबित हुआ नहीं है आज इस पूरे मैच में। बहुत से खिलाड़ियों ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस पर इतने ज़्यादा रन्स मिले नहीं। हालांकि पिंडी की पिच पर आपको बैकफुट पर रन्स मिलते हैं अगर आप में ये अहलियत हो, लेकिन क्योंकि पहला दिन है और निस्बतन स्लोनेस है क्योंकि सीज़न की इब्तिदा हो रही है। बाएं हाथ के मीर हमजा भी इसी तरफ शॉट खेलने की सलाहियत रखते हैं और कोशिश करेंगे। ऑन साइड पर 3 फील्डर स्वीपर पर मौजूद हैं। सिंध को जरूर 1-2 बड़ी हिट्स की जरूरत है इन आखिरी 5 बॉलों पर। और ये अच्छा शॉट खेला, फील्डर आ गए नीचे और एक और बहुत ही ये उम्दा कैच हो सकता था आखिरी मौके पर। ये फैसल अकरम जो हैं, क्या ये कैच गिरा बैठे हैं, उनसे पूछा जा रहा। जी हाँ, ये कैच उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। जरूर गिरे आखिरी लम्हे पर, अपना तवाज़ुन कायम ना रख सके, लेकिन गेंद को हाथों से जाने नहीं दिया। काफी बड़ी बाउंड्री है उस साइड पर। मीर हमजा ने कोशिश की, लेकिन सदर्न पंजाब की कैचिंग एक मरतबा फिर बहुत ही शानदार, और सिंध की इनिंग्स को बिल्कुल समेट के रख दिया इन्होंने आखिरी 2-3 ओवर्स में। मीर हमजा भी स्कोरर्स को जहमत दिए बगैर आउट हुए। समीन गुल की एक और विकेट, 145 पर नो आउट। विकेटें यहाँ पर बिल्कुल खज़ां रसीदा पत्तों की तरह गिरती जा रही हैं। सिंध की बाउंड्रीज आ नहीं पा रही, एक बार फिर बाउंड्री नहीं आ पाएगी। अच्छी फील्डिंग की इमरान रंधावा ने, इतनी आला फील्डिंग करते हुए कम देखा जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिसका मुजाहरा आज किया है सदर्न पंजाब ने। और उसकी मिसाल ये एक और कैच मीर हमजा का बाउंड्री लाइन पर नौजवान फैसल अकरम ने लिया। अच्छा जज किया, पहले आगे की तरफ आगे थे, लेकिन बॉल को की फ्लाइट को जज किया और पीछे जाते हुए अच्छा कैच किया। 147। सरफराज चाहेंगे कि वो आखिरी तीनों गेंदों का सामना करें। उठाकर खेले, एक बार फिर मौका है और ऐसे हाथ से नहीं जाने दिया। इमरान रंधावा वो भी अब आज के कैचर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए, और सरफराज अहमद जो ये बड़ा शॉट खेलकर खुद को लिस्ट सेंचुरी के करीब करना चाह रहे थे, इसे सही तरह सर अंजाम नहीं दे सके। और यही वो लेंथ साबित हुई है जिस पर बैटर्स बड़ी शॉट नहीं खेल सके और अपनी विकेटें गंवाते रहे यके बाद दीगरे।
25 रन के इजाफे के साथ 6 विकेटें गिरी आखिरी 5 ओवर्स में। सरफराज टॉप स्कोरर साबित हुए, लेकिन वो भी फोर्स नहीं कर सके आखिर में। गिरती हुई विकेटों की वजह से प्रेशर उन पर मुसलसल रहा। 147 रन बनाकर सिंध की टीम आउट हो गई 2 गेंदें पहले ही, और मौके पर लग रहा था कि वो 160-170 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो फिनिशिंग की सदर्न पंजाब के बॉलर्स और फील्डर्स ने विकेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, और जो अपने राइट एरियाज में बॉल किए, अपनी वेरिएशंस इन पेस और लेंथ, उनकी काफ़ी एक्सिक्यूशन में महारत नज़र आई आज। और जैसे तारिक ने कहा कि कैचिंग थी और ग्राउंड फील्डिंग थी वो बहुत ही शानदार थी। ये कहानी है सिंध की बैटिंग लाइनअप की। स्टार्ट ज़रूर मिले खिलाड़ियों को, लेकिन कोई भी उसको कन्वर्ट नहीं कर सका। सरफराज अहमद 42 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इन शर्जील और साइम अयूब, उसके बाद सऊद शकील और साद खान इनिंग्स को तूल ना दे सके, लेकिन बिल्कुल आखिर में आप देखें तो विकेटों की झड़ी लगी रही, और इसकी वजह से सिंध की टीम 20 ओवर खेले बगैर ही बोल्ड आउट हो गई। यहाँ ज़्यादातर बैट्समैन ऐसे थे जो डबल फिगर में नहीं आ सके। समीन गुल पहले 2 ओवर्स में महंगे साबित हुए। उन्होंने 19 रन दिए थे, लेकिन फिर 5 रन देकर उन्होंने 3 विकेटें ली अपने दूसरे स्पेल में। मोहम्मद इलियास ने भी बहुत ही अच्छा कमबैक किया, और अपने दूसरे और तीसरे स्पेल में आकर 3 खिलाड़ी आउट कर गए। फैसल अकरम ने इमरान रंधावा के साथ मिड ओवर्स में आला बॉलिंग का मुजाहरा किया, और खासा मुतासिर किया लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन के जरिए फैसल अकरम ने। मोहम्मद इलियास इस वक्त मैन ऑफ द मोमेंट हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज के टॉप विकेट टेकर हैं। इलियास, उम्मीद करते हैं कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो गई। कुछ अपनी कारकर्दगी के मुतालिक बताइएगा। आपकी टीम ने तो विकेटें उड़ाकर रख दी ये आखिरी ओवर्स में। तारिक भाई, शुरू में थोड़ा सा पिच को हमने टाइम पे रीड नहीं किया। हम पेस पे पेस दे रहे थे, तो थोड़ा सा हमने रीड किया कि लेंथ बॉल इस पे थोड़ा सा मुश्किल है। तो कुछ बताइए, आप अनफिट हो गए थे और उसके बाद आपका ये पहला बड़ा मैच था। कैसी तैयारी की इस नए सीज़न के लिए? आज ही बिल्कुल मैं PSL में अनफिट हो गया था, जिसके बाद मुझे अपने बॉलिंग को ठीक करने में बहुत टाइम लगा। फिटनेस पे काम किया, तो उसी फिटनेस का नतीजा है ये जो आज आपने कैच लिया साइम अयूब का। ये बिल्कुल गैर मामूली था। जी बिल्कुल तारिक भाई, फिटनेस पे काम किया था बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे फील्डिंग कोच के साथ में डेली कुछ आधा घंटा 45 मिनट फील्डिंग सेशन करता हूँ, जिसका यही फ़ायदा है कि वाइड बॉल में ज़्यादातर बाउंड्री पे कैचेस आते हैं। तो मेरी ख्वाहिश भी यही होती है, मैं कैप्टन को खुद कहता हूँ कि मैंने बाउंड्री पे फील्डिंग करनी है, तो जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर बॉलिंग में कमी पेशी आ जाए तो ताकि मैं वो फील्डिंग पे कवर कर सकूँ। इलियास शाह फैसल कमेंट्री बॉक्स से। विकेट को देखते हुए स्कोर कैसा लग रहा है? आपकी बैटिंग को देखते हुए कुछ इस बारे में, रन चेस के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, जैसे वो जा रहे थे तो हम तो यही समझ रहे थे कि 180-170 प्लस रन होने हैं, लेकिन बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की पिच को रीड करते हुए। तो मैं समझता हूँ हमने बैटिंग के लिए अच्छा टोटल सेट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम इसको चेस कर सकें। तो इलियास, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। 147 रन बनाए सिंध ने। उनकी टीम आखिर में ढेर हो गई, और सिर्फ 12 रन के इजाफे में उन्होंने अपनी आखिरी 5 विकेटें गंवा दी। सदर्न पंजाब की टीम को सीजन की पहली जीत के लिए 148 रन दरकार हैं, महज 7.4 की औसत से। तो यहाँ इस वक्त मिड इनिंग्स ब्रेक है, जिसके बाद देखिएगा सदर्न पंजाब की इनिंग्स।
Welcome back. It's Sindh versus ATF Southern Punjab. And Southern Punjab placed Sindh to bat first. Has been a roller coaster ride for them. Sharjeel Khan took off the way he loves it, dominating the power play. It seemed like a decent pitch. Timing was good. Not much bounce to witness. And this was a glorious stroke. Just easing away, lofting shots. Timing was superb on it. This was the one drop catch. Didn't cost much, but would have been great if they could have grabbed onto it. Runs kept flowing for them. The fielding wasn't spot on for Southern Punjab as well. And then this, Ali Majid doing what he does best, grabbing Sharjeel Khan right on the crease. We saw some brilliant stroke, some good cricketing shots. Seemed like the timing was towards there, and Mohammad Ilyas this time was a tricky discussion, but let's see. Runs kept coming. Sindh did struggle a bit, but Saim Ayub, he made a mark when he came into the bat. Yeah, 147 is just below par. That's a brilliant catch. These kind of catches just change the course of the game. Sarfaraz was trying his level best, and he was looking to carry his innings forward, try to bat the 20 overs. But just wasn't getting catches like these, were just disrupting their plans. And Sarfaraz's opposite end wasn't really helping him out. Some changes in the batting order, but just one-off boundaries here and there. Otherwise, the innings never exactly took off as Sindh would have expected. And some very good bowling, targeting the stumps. Well done by Salman Agha, the way he's used his bowlers. Randhawa was brought in the 15th over. He was a touch expensive, but then he also managed to grab one wicket, courtesy this brilliant catch. Sohail Khan trying to use a long handle. The ball probably, you'd say, kept a touch low. But it's always handy when you're targeting the stumps as a bowler. You'll be rewarded. It was 19.4 overs that Sindh could bat. They couldn't finish off with the 20, and they managed 147 after being asked to bat first. Sarfaraz kept his battle on from one end, but eventually perished down at deep mid-wicket. Probably did the bulk of the scoring. So ATF Southern Punjab need 148 at 7.4 runs and over. So it's the fact that we were talking about what the average score here is. First innings is 163. And it was a touch surprise, Marina. At the time of the toss, Saud Shakil said we'll be targeting 170, 180. That's an ideal situation, yes. But time and again, we've seen that when you set a particular target in your mind as a team batting first, in trying to follow that, you forget that certain things come in the way, maybe the conditions, and then you immediately have to change your plans. And that's exactly where I think they fell behind. Again, you have to re-evaluate the surface you're playing in, the ballers coming in, whoever is making an impact when we talk about fast ballers or the spinners. So probably Saud Shakil was again looking for 180, 170 plus, and they played one-directional cricket. You have to give credit to the bowlers as well, and fielding was exceptional. Not in the beginning, but towards the end, they kept them quiet. Zain Abbas, his partner, he'll be at the striker's end. Those are his numbers. 59th game for him in T20 career. Average is a bit 27.6. Top order batsman. He's got 10 50s. We don't usually see Sohaib Maqsood opening. He's more suitable. You'd like to see him at number 3. But these days, when you have those power hitters, it can go either way. You can have the number 3 coming in the first over, second over. Sometimes he probably will wait on a little more. But he's your integral part, your best batsman. Sohail Khan gets a call up. He's, I'm told, just joined the side last night in the absence of Ruman Reis. He wasn't initially part of the squad, but Sohail deservingly gets that call, so he's there.
And he can swing the ball, the new ball. Gets the genuine outswing, but right now he's got a left-hander on strike. Just the two fielders. There's a deep backward point, and there is a square leg. The two men outside. Probably the idea with Shoaib would be to maximize this power play. He's got some batting to come. But obviously, we've seen that it hasn't been easy to just come and play that T20 mode right away. The surface has been double-paced, not much bounce to offer. So with the new ball, they can go after Sindh's attack. He does get the ball to talk, especially the new one. So it will happen for the first 2 overs or so. Negotiate that spin as an opening batter, and you get that out of the way. Again, on a pitch like this, you would probably have a little, not a silent, but not a very extravagant power play. You'll try to keep things intact, see the new ball off. You're not chasing a big total here, and also keeping in mind that Sindh's experience than their opponents. You've got Sohail Khan, Mir Hamza, Anwar Ali. They've been there. And then you've got some promising talent in leg spin of Zahid Mahmood. You can use in the part-time of Danish Aziz, the spin. So I just feel that they'll have a little more balance there compared to ATF Southern Punjab. A hint of in-swing there. Well, they need to play normal cricket. I mean, we've seen there has been some brilliant shot where the batter came down and just timed the ball around. The outfield is pretty decent. But yeah, they shouldn't be imposing anything or enforcing shots, especially when they're in the power play. So Maksud, he will go after whatever is in his zone. That slip, 4 in the circle on the offside, 3 on the onside. A few changes being made, so short fine leg is now moving across. It's going to come to sort of a square leg, and there is a dig backward square leg for Shoaib Maksud. Slightly upish, but will race away. Just around that third man region. There's a good effort down there, and probably Mir Hamza, while picking the ball, touches the boundary skirting. We'll probably have a second look on that. Well, this will definitely make some difference. The fielding, ATF Southern Punjab were lacking in it. At the end, there were some good catches, but have a look at that. Good commitment by Mir Hamza. It seems like he probably, I think it has touched the curtains. Yeah, even if it didn't touch the rope or the boundary, it's Mir Hamza when picking the ball up. He's touching the boundary skirting while holding the ball. So that's a boundary there. The ball does travel out here. Yeah, good drive there. It's covering the line of the ball. It's a powerful hitter. Shoaib Maksud, once he gets going, he'll take his time, and he will rely more on strokes rather than rushing between the wickets and running through. He loves to angle the bat to pierce those gaps with good fielding at point region. And these are important dot balls right up the front. Fielding has to be very crucial. First over done, and ATF Southern Punjab are 5 for no loss.
Five for no loss. And needing 148 to win this first game of Kingdom Valley National T20. Mir Hamza takes the new ball. It's from the far end. Mir Hamza, 42nd game for him, 41 wickets, economy of 8, and a best of 4 for 9. He's got that one slip as well. The previous over shot, you're talking about how good or how wristy Sohaib Maqsood is. His wrist was his undoing. He was away from international cricket for a long time. He was compared to Inzamam ul Haq. I don't know, more for his wristy game, or he hails from Multan as well. But we've seen he's got a fair share of power and style timing, both. On his day, he's a treat to watch. Top edge will go over the keeper. Third man is not going to have any say in this. That's a 6. Just the pace on the ball has helped it all the way. Well, they'll take it. It wasn't a convincing shot. Zan just trying to work it into the leg side. Mir Hamza has got decent pace behind him. Getting tall on him. Lucky runs. Just the comparison says Sindh's first 6 was in the 16th over. Here in the second over, you see a maximum, though it wasn't intended to go there. These days, the openers will just take on that short ball, and especially in the power play when the field is in. Just off the hips, that's not a good line from Mir Hamza. He'll have to pay with another boundary here. This time much in control, likes to whip it. Zan usually up on his toes. He's very animated when he's on the crease. He's helped it on its way. The length was fine, but the line, that's what made him just execute the shot. He'll move around a lot. Zan Abbas has represented Pakistan back in 2016, Pakistan A. There's always the added advantage when you're chasing. You exactly know how to go about it, especially when you've got not a very big total you want to chase. So you'll just look for the deliveries where you can score those big ones from. And 12 out of 18 matches are won by sides chasing on this ground. And that's the way to go. I say any ground in T20s, you'll find chasing sides winning more games. I remember back in the day in Inzamam ul Haq, when he was leading the side, he did say that you talk about having a required run rate of 13 or 14, and if you're chasing, that's very much gettable. So you don't worry about those things if you've got 2 overs and 30 runs to go. Yes, sustaining a bigger required run rate over a longer period of time, that's a little tough. So sides prefer chasing, then they can pace their innings accordingly. If there's a big total, they try to attack the power play. Yeah, they'll try to just make sure that they don't lose unnecessary wickets here. It was a big call for catch. That's a good stop, just slapping it back into play. It was hit hard and was traveling. And come back for 2. Yeah, there was a change in field. Third man came into the circle and the fielder exactly there. The point cover was pushed back. Didn't carry, lucky for him. That's the end of 2-18 without loss, 80 of Southern Punjab.
when you get a target in front of you, you know how the surface is playing because you've already bowled. And when you work out on the opposition, you know what bowlers to target and how to just keep rotating the strike and go for the boundary options, because it's much more calculated. Again, throwing the bat at it because there's width available. Another couple added to the total. सही है सही है एक विकेट की बात है अभी ठीक चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है एक विकेट की बात है शाबाश He goes so hard at the ball. Zan, not much of feet movement, likes to stand tall but slashes his bat, throws the bat. This is a half chance, one-handed shot. That's why probably didn't carry to the fielder. Lucky for him though. Shout. Has it pitched outside? No, it hasn't. It's been given. For a moment, the only doubt would have been, is it pitching outside leg? But he gets that shape going, Sohail Khan. That's the first scalp. Well, he knows how to take wickets, Sohail Khan. He reads the situation well, the batter as well. And this time, Zan always looking to score into the leg side, angling the bat. He was caught on crease right in front. First one down for ATF Southern Punjab, and it has to be Sohail Khan. Zain Abbas goes on 14, ATF Southern Punjab 20, one down. So 20 for 1 as Sohail Khan strikes. He gets rid of Zain. In comes Azishan Ashraf. He usually opens the bat for ATF Southern Punjab, but he swapped positions, I guess, with Shoaib Maqsood. But he also bats down the order, so he's quite flexible in that form. I really didn't have a good outing at the opening slot last year, struggled a lot, is very vulnerable outside off stump, likes to chase the ball, anything going away. They've got the slip in, short third man, Sohail Khan just settling him. And too much of an angle there of swinging away down the leg side. Let's have a look at the wicket. It was good length. Sohail Khan just moving across the line, that front foot going across Zain Abbas, and then the angle bat coming in. He missed the line totally. And there was no worries on Sindh's end. They've got their man. Well, that's well fielded. Slight hesitation, he'll always have that. The call was from Sohaib. Don't know why Zishan was watching the ball there. It's very tough for the striker to abort when he's relying on his non-striker, because it's his call. And if he hesitates, then he's nowhere. Yeah, he had a glance at Shoaib, who stopped and then ran away. And Zishan he did watch the ball, but he was off and running. Because Mir Hamza was on the circle line.
Lucky escape there for them. Yeah, had Mir Hamza not fumbled there, there would have been trouble. Surely one of them were probably in the dugout by now. So much cricket happening around the world and so many options available for people who love the game. You've got the Premier Domestic Tournament, the Kingdom Valley National T20 starting today. You've got the Asia Cup games that you can enjoy just after this, which is why the National T20 games are starting early. But once we get into the second leg of the tournament, when the Asia Cup is done, we go into the evening games. You'll see the first game starting at 3 and the second one at 7. Wasn't a wide shot to adapt against Sohail Khan especially. Had the fielder inside the ring, the third man. Wanted to guide him, but you have to be very careful. It's not that much of a bounce here. At occasions we have witnessed that the batters have struggled a bit to time the ball, especially at the back of length, and we haven't seen many pull shots or cut shots. It has been a double pace wicket, and at times it just kept low. You have to really time it well to earn boundaries, or it has to be a very loose delivery. Some problems there with Sohail Khan. It's not easy out there, it's hot. They'll have to keep in mind the timing here, because you know the days are getting shorter and there's light. That will be an issue. You can't have much game after 6, so you have to fit in 2 matches in the day. And we've seen that the slow over rates, what they can do to you. It can cost you a game at times. 3 overs gone, 24 for 1. ATF Southern Punjab. The openers back in hut, Zain Abbas. Sohail Maqsood and Zishan Ashraf are out in the middle. Salman Ali Agha to follow Ali Majid. And then you can see the all-rounder Faisal Akram, Imran and Dhava. He can bat too. But Sohail Maqsood, he will have to play an anchor inning here. Hasn't been so much of displaying his shot. Good bowling so far from the Sindh. That's the area to bowl. And Zishan Ashraf usually vulnerable outside off stump. He loves to chase it, but this time just held its shape, probably playing for the ball to come in. The wicket taker. Sindh did well last year. He couldn't make it all the way, but the performance overall was pretty good. He's been there with the Sindh side for the longest time. Preferred all-rounder for them, Anwar Ali. I remember one season where ATF Southern Punjab wasn't really doing well, but out of nowhere, they qualified for the final. And there was one shortened version of the game where Sohail Maqsood smashed the living daylights out of the opposition and scored the desired in a very limited amount and qualified over net run rate. Yeah, it was like 31 deliveries, 80 odd runs. That's good bowling from Mir Hamza. He has evolved as a bowler. Started to adjust his line in length and pace in shorter format. The new captain for Sindh, Saud Shakil, is not new to the captaincy. He's captain Pakistan Shaheen. He's got a lot of support around him in terms of seniors.
And that one came in. Wants to come back for the second again. Sent back Shoaib Maqsood. That would have been mighty close had the ball hit the stumps directly. The yes-no factor is such a problem here. We'll have a look at that again. How close was that? Well, that's twice now. They have survived it. Again, Zishan just watching the ball. Shoaib was very casual in approaching, and then all of a sudden, he never watched his partner. Oh, it would have been curtains for him. They need direct hit. Sindh. We're just going back in time. I was talking about that wonderful performance from Shoaib Maqsood and even Coach Dilshah. It was the last of the group games in the National T20 back then. And they scored 166 for 3 in 10.4 overs, ATF Southern Punjab, and they qualified. Beat Balochistan on the same ground. It was a massive knock there. And his side has always relied on some good youngsters and talents. You might not find those absolutely big names if they've got that perfect balance there, and on the day they can rip you apart. Just a delivery before this, the slip has been removed. I was just about to say good to see Saud Shakil still attacking because he's defending a low total. It's 27 for 1 after 4. See, Marina, the difference in tactics now, the bowling change, Anwar Ali coming in. If you compare the two sides, we saw that only two or three overs were used with pacers until the 11th over by ATF Southern Punjab. They relied more on spin. Their captain bowled his 4 overs, 3 overs only with pace. Here you see that Sindh is relying more on their pacers and medium pacers. They haven't really given even a part-timer, Danish Aziz or Zahid Mahmood, a go. Straight in the air, and should be a wicket on the first ball. He didn't complete his shot really, Zishan Ashraf. And once again, we've seen that he doesn't have that full follow-through. It's just the bat hanging there, and he hands it over to mid-off. Well, really couldn't time it well. Just went for the chase. Have a look at that. He thought that he could really clear the boundary, the inner circle actually, but never, the ball never arrived. And the experience Anwar Ali, he's been brought into the attack and he's taken and strike right away. Zishan Ashraf has to walk on 4, Southern Punjab, 27-2 down. Captain comes out, Salman Ali Agha at number 4. 27 for 2 at the moment, ATF Southern Punjab. He's had the share and taste of the Pakistan colours, Salman. Right now has been given the opportunity to test his abilities as a captain. But that shot really, we'll have a look at that from Zishan, it's almost a nothing shot. And we will actually look at it after this ball. What exactly was attempted there? We'll actually notice that where the mid-off fielder is catching the ball, Saud Shakil.
Thank you. See where he catches the ball, Saud Shakil. So it's not like you barely missed the fielder there at the 30-yard marker. He's collecting it down right at his ankles. So the ball is dying within the 30-yard circle. It's just a shot with no power whatsoever. When you are struggling in terms of form, you doubt yourself. You're not sure if your shots are going to carry or not. But again, it was there to be hit. Probably could have waited ever so slightly to just time it well, but it hasn't been the year for Dishan Ashraf. His struggle continues. Oh! Have a look at the two fielders. They're almost like two third-mans there. First, I thought his backward point, but Sharjeel and Sohail Khan, you see at the top of your screen, when the ball is delivered, they're still a little closer than where they are right now. It's almost like a short third man and a backup. Now he's moving out. Anwar Ali usually brings the ball back into the right-handers. I'm not sure what his ploy was. Probably wanted to keep the ball outside Ostam for Salman Ali Agha. Now if they change it, we've got short mid-wicket. Not a bad start this for Sindh in reply. Defending a low total, you've got the opposition 28 for 2. Zishan, just the last one dismissed. And probably thinking of what he could have done better on that shot. But in recent times, you've seen him get out, trying to play that stroke, especially when you're in the power play. All you need to do is just clear that circle. And not enough power in the bottom hand and the follow-through. The ball was there to be hit for sure. It was Fuller. Would have played through the line. This was the idea. Change in field now. It's got deep square leg now in the circle. And the extra cover has been pushed. He'll have to play that shot, Sohail Maqsood. I think they're probably trying to keep Sohail off the strike. From the other end, they would like to go after the batters. Salman now back on strike. He's got ample experience in bowling, Sindh. 2 runs and a wicket in this over. He's got to finish well, Anwar Ali. So important that you value every single delivery of the over. So you've got to finish with probably a dot or maximum a single. You wouldn't want to spoil it. One more over to go in the power play after this. Down the wicket again, one hand off the handle, and again sent back Salman. There probably was a single here. This has got to be sorted out. 5 gone, 29 for 2. नहीं यहाँ पे आखिर में कौन करता सर्किल से बाहर है बाहर दबाव सदर्न पंजाब पर है।
और अब पहली बार यहाँ स्पिनर्स को लाया जा रहा है। दानिश अजीज बॉलिंग करेंगे पवेलियन एंड से। आज बैटिंग में जल्दी मौका नहीं मिल सका था, लेकिन पावर प्ले में ही कप्तान की नजर उन पर पड़ी है। हो सकता है कोई इनको बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर देखना चाह रहे हूँ। सही है इतनी आसान पिच साबित हुई नहीं है अब तक। 2 किलोमीटर का टेस्ट दिया है, पेसर्स के सामने नहीं होगा भागना। हमने ड्राइव करते हुए बैट्समैन को बहुत कम देखा है कामयाबी के साथ। थ्रू द लाइन शॉट्स खेलने में मुश्किल पेश आ रही है। सऊदी आराम से बहुत अच्छे, बहुत आला। जी जैसा पिच हम यूजुअली रावलपिंडी के स्टेडियम के एसोसिएट करते हैं उस तरह का पिच नहीं है। थोड़ा मुश्किल जरूर आ रही है यहाँ पे बैटर्स को अपनी इनिंग को डेवलप करने में। उठाकर खेला, यहाँ पर मौका है और फील्डर ले गया कैच। साइम अयूब जिनने गेंद पर नजर रखी और दायरे के बाहर जाते हुए इस गेंद को कलेक्ट कर लिया। लूज शॉट खेला सुहेब मकसूद ने, जो कि इस पिच पर बिल्कुल चुपचाप खेल रहे थे इससे पहले। या फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उस तरीके से बाउंड्रीज मिल नहीं रही थी, फ्रंट रन्स हो नहीं रहे थे। कुछ अलग करने की कोशिश की यहाँ पे सुहेब मकसूद ने। रूम दे के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि ये पिच वैसा नहीं है कि जहाँ पे आप अपनी मर्जी से शॉट्स मार सकें। 9 रन्स बनाए, साइम अयूब ने कैच किया। दानिश अजीज की पहली विकेट 29 पर 3 सदर्न पंजाब। बात सुनो, पहली बॉल पे ये ले लो, वो पीछे कर लो, अभी ये वाला रन बचाओ। शारून सिराज जो कि बड़े हुनरमंद बैट्समैन हैं, आज एक बड़ा अच्छा कैच लिया था इनने फील्डिंग करते हुए। एक वाला फील्डर का अच्छा ओके, सही है। पिछले सीजन के आखिर में इनको मौका मिला था और इस बार इब्तिदा से ही सेलेक्टर्स ने इनको टीम का हिस्सा बनाया है। टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, लेकिन आज नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। टीम मुश्किल में है, लेकिन कहते हैं कि बहरान में ही मौके भी होते हैं जिनसे आप फायदा उठाना होता है। ये दूर से खेलने चले गए और इस पिच पर दूर से शॉट खेलने में मुश्किल पेश आ रही है सभी खिलाड़ियों को। जी प्लान बी पे जाना होगा यहाँ पे सदर्न पंजाब को। जितना जल्दी चले जाएंगे, जितनी जल्दी एडजस्ट कर लेंगे, उतना ही बेहतर है। लेकिन ये खराब शॉट है, ये इस तरह आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं सुहेब मकसूद जैसे प्लेयर से, जो कि सीजन प्लेयर हैं। सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। लेकिन जब आप खराब शॉट मार के आउट होते हैं तो बाकी यंगस्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पे सदर्न पंजाब के साथ हो रहा है। यहाँ इस पर बात होगी आगे चलकर। यहाँ पर पावर प्ले तमाम हुआ 30 पर 3। एक सामने जाओ सऊद साथ। ये पावर प्ले में सुहेब मकसूद खुद बैटिंग करने के लिए आ गए। जैन ज्यादा एतमाद का मुजाहरा नहीं कर सके और बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए। सुहेल खान ने इन स्विंग पर उनसे छुटकारा दिलाया और उसके बाद ये लूज शॉट खेला सामने की जानिब जीशान ने। यके बाद दीगरे ये 2 विकेटें गिर गई। सुहेब मकसूद ये बड़ी मछली जाल में आई सिंध के। यहाँ पे जो वाज़े फ़र्क दोनों टीम्स में लग रहा है वो एक्सपीरियंस का है। हमने पहले भी बात की थी कि जैसे सिंध की टाइम जब बैटिंग हो रही थी तो 150-155 रन अच्छे होंगे, क्योंकि बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत एक्सपीरियंस है। सोहेल खान को हमने देखा, अनवर अली, और मुझे लगता है कि अनवर अली ऐसे बॉलर हैं जो इस पिच को सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पेस है नहीं है, कटर्स मारते हैं, और इस पिच पे जो कटर्स कर सकते हैं वो बहुत कामयाब होंगे। दायरे के फील्डर्स को सऊद ने ज़्यादातर 4-4, 5-5 गज आगे खड़ा किया है ताकि आसानी के साथ खिलाड़ी जो है सामने खेलकर रन ना बना सकें।
लेकिन यहाँ एक सवाल और भी है, क्या सुहेब मकसूद को इनको ओपनिंग करने के लिए आना चाहिए था? क्योंकि शारून जो हैं टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, या जीशान जो स्पेशलिस्ट हैं टॉप ऑर्डर में खेलने के, और अगर वो विकेट गिरे बगैर आते तो टीम पर कम दबाव होता, और इस वक्त ज़्यादा दबाव झेलना पड़ेगा अब इनके मिडिल ऑर्डर को। सुहेब मकसूद को सब जानते हैं कि वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और इस वक्त अगर पाकिस्तान टीम में भी उनकी शमूलियत हो सकती है तो मिडिल ऑर्डर की किसी पोजीशन में हो सकती। तो इस तरह के क्रिकेटर से तवक्को की जाती है कि वो अपने लिए आसान रास्ता नहीं ढूंढेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में। जी हाँ, शायद आखिरी अगर हम 1-2 साल से देखें तो टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते आए हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी, PSL में भी अगर हम देखें तो टॉप 3 में बैटिंग करते रहे हैं सुहेब मकसूद। लेकिन तारिक भाई, अगर हम बात करें 13 बॉलें आपने ऑलरेडी ले चुके थे, तो आपने जो मुश्किल वक्त था वो तो गुजार लिया था। उसके बाद इस तरह का शॉट खेलना और आउट होना, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है एक ऐसे प्लेयर से जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पाकिस्तान के सर्किट में हैं। तो ये डिसअपॉइंटिंग, एक शॉट सिलेक्शन बहुत गलत हो गई उनसे, और उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। जाने दिया, क्योंकि 2 फील्डर तैनात किए गए हैं। अनवर अली का ख्याल था कि ये पहुंच में थी शारून की गेंद। या अच्छा है कभी कभी सरप्राइज करना बैटर को, क्योंकि ज़्यादा पेस नहीं है तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, और अगर ये थोड़ा वेल डायरेक्टेड होता, थोड़ा बॉडी में होता, सर और कंधे के दरमियान में होता, तो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती थी यहाँ पे अनवर अली के लिए। बहुत ही तजुर्बेकार ऑलराउंडर हैं डेफिनेटली मेरे लिए तो ये, क्योंकि जिस तरह की ये बैटिंग करते हैं लेट मिडिल ऑर्डर में आके, एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकते थे, लेकिन शायद अब थोड़ा देर हो गई। लेकिन अभी भी बहुत फिट हैं अनवर अली। सिंध की इस टीम में भी ये ज़्यादातर नौजवानों से फिट हैं। यहाँ पे अब जो जिम्मेदारी है वो सलमान अली आगा को अपने कंधों पे लेनी होगी। कप्तान है, यंग कप्तान है, उनको दिखाना होगा कि वो क्या पोटेंशियल है उनके अंदर, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सलमान अली आगा के लिए। पाकिस्तान टेस्ट सी साइड में अपनी जगह बना चुके हैं, वनडे साइड में भी बना चुके हैं अपनी जगह, लेकिन अगर T20 क्रिकेट में यहाँ से इस मैच को मुश्किलात से निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। नज़र आना भी चाहिए, आपको दूसरों से मुख्तलिफ लगना चाहिए कि आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। आज अच्छी बॉलिंग की, आगाज़ अच्छा मिल गया, टॉस भी जीत गए सलमान अली आगा। और ये नहीं भूलना चाहिए सलमान को कि जो डेप्थ नहीं है इस टीम की बैटिंग लाइनअप में। इमरान रंधावा कुछ हाथ बटा सकते हैं, मोइनुद्दीन, ये एक और ऐसी सिलेक्शन है। हालांकि ये सीज़न का पहला ही मैच है, लेकिन ये मोहम्मद शहजाद को खिला सकते थे। ये जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ये पाकिस्तान अंडर-19 टीम से वर्ल्ड कप में बहुत शानदार खेल कर आए हैं, इनको टीम में खिलाया जा सकता था मोहम्मद शहजाद को। ये बहुत आला फील्डर भी हैं, बॉलिंग में भी हाथ बटा सकते हैं। तो ये बाल बचे, शारून रन आउट होने से यहाँ पर दूसरा रन भी हासिल कर लिया गया। क्या शायद उनको एहसास हो गया कि बड़ी बाउंड्रीज नहीं लगेंगे तो आपको जो स्ट्राइक है वो रोटेट करते रहना है, और शायद ये एक लकी रहे यहाँ पे कि डायरेक्ट थ्रो अगर लग जाती, जी हाँ, बहुत मार्जिन से आउट हो जाते हैं यहाँ पे। बड़ी बाउंड्रीज लग नहीं रही हैं तो आपको इसी तरीके से सिंगल्स 2 चुराने होंगे फील्डर्स के हाथों से। ये बहुत तजुर्बेकार टीम है सिंध की, इतनी आसानी से ये जो बकिया 111 रन है ये होने नहीं देंगे। हाँ, ये उतने ही रन हैं जितनी मुश्किल भारत को हुई थी इतने रन बनाने में पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तानी बॉलर्स हैं मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए थे। टीम स्पिरिट नजर आई जो ऐसे स्कोर्स को डिफेंड करते हुए आमतौर पर बढ़ जाती है, और उन्हीं से टीमें बनती हैं। फिर 7 ओवर्स मुकम्मल हुए, 38 विकेट पर। एक बार फिर वही बात जो हम कर रहे थे कि सिंगल्स रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक बहुत करनी होगी यहाँ पे सर्दन पंजाब को। 38 पर 3।
ये डिसअपॉइंटिंग सदर्न पंजाब का बैटिंग कार्ड है अभी तक। जिस तरह का आगाज़ उनको चाहिए था उस तरह का मिल नहीं सका। ज़ैन अब्बास काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, शोएब मकसूद भी बहुत एक्सपीरियंसड हैं, लेकिन बॉलें काफ़ी ली, लेकिन उस तरीके से रन कर नहीं सके। ज़ीशान अशरफ जो कि ओपनर माने जाते हैं, नंबर 3 पे खेले, ज़्यादा कुछ कर नहीं सके। दानिश क्या बात है दानिश, यही बेटा दानिश बहुत आला। इस पिच पर अभी तक उन्हीं खिलाड़ियों को हमने कामयाबी समेटते हुए देखा है। या तो इंतजार करके खेल रहे हैं गेंदों का, या फिर टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़, ठीक है, ओनली वन। ये ऐसा पिच नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे आएंगे और आप बड़ी हिट्स मारना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आपको अपनी इनिंग बिल्ड करना होगी, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी है वो सलमान अली आगा के कंधों पे है, कि वो ऐसे प्लेयर हैं जो कि टीम को लेके चल सकते हैं, और जब जरूरत पड़े वो बड़े हिट भी मार सकते हैं। तो ये क्वालिटी अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी सलमान अली आगा को। शाबाश। यहाँ जिस तरह सरफराज अहमद ने आज बैटिंग की थी, आपको रन्स कई बार बुनना पड़ते हैं T20 में भी। खराब गेंदों का इंतजार करना पड़ता है, बाउंड्री बॉल्स आपको मिल जाती हैं जब बॉलर विकेट लेने के लिए ज्यादा कोशिश करता है, वो कम होनी चाहिए। लेकिन मुश्किलात यहाँ पे अगर सदर्न पंजाब के लिए, जैसा आप आगे बात कर रहे थे कि अगर यहाँ एक विकेट गिर जाती है, पकड़, उसके बाद ज्यादा बैटिंग में डेप्थ है नहीं है। इमरान रंधावा की हम बात कर रहे हैं, मोइनुद्दीन की बात करें, मोइनुद्दीन बिल्कुल यंग है, ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं हुए, और मुश्किल हालात में अगर बैटिंग में आती है तो वो मुश्किलात हो सकती हैं। ओनली वन उमर, अच्छा खेला गैप में, और यहाँ पर दूसरा रन का मौका हो सकता था, लेकिन पहला रन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चलकर दोनों खिलाड़ियों ने बनाया। उमर बिन यूसुफ को आना पड़ा। सवाल मेरा तारिक भाई आपसे यही है कि क्या यहाँ पे आमिर यामीन को ड्रॉप करना एक सही डिसीजन था सदर्न पंजाब के लिए? क्योंकि शायद ये पिच ऐसी है कि जहाँ पे उनकी बॉलिंग से भी मदद मिल सकती थी, और बैटिंग तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि वो अच्छी कर सकते हैं। 41 पर 3। इमरान रंधावा और आमिर यामीन में से किसी एक को आज टीम में मुंतखब करना था, तो आमिर यामीन जो है, हालांकि इनकी बैटिंग में ज्यादा डेप्थ आ सकती थी जिसकी जरूरत है इस सदर्न पंजाब की लाइनअप को। तो एक मुश्किल फैसला रहा होगा शाहिद अनवर के लिए, हेड कोच के लिए, आमिर यामीन जैसे खिलाड़ी को बेंच पर बिठाना। हम इससे पहले सीजन्स में देखते रहे कि दोनों ही खेलते रहे, इकट्ठा खेलते रहे, इमरान रंधावा भी और आमिर यामीन भी, लेकिन शायद स्पिनर्स को उन्होंने देखा कि पिच के मुताबिक स्पिन ज़्यादा ऑप्शंस पे बेहतर पिच करनी होगी। अली माजिद को खिलाया उन्होंने, फैसल अकरम को खिलाया। आ गया दानिश, आ गया दूसरा लेना चाहते हैं, लेकिन एक बार फिर मौका नहीं दिया। दानिश ने बहुत ही कमाल पेशकदमी की, बाउंड्री लाइन से मिले हुए खड़े थे, लेकिन यहाँ दूसरा रन उन्होंने होने नहीं दिया। दबाव मुसलसल रखा हुआ है सिंध ने सदर्न पंजाब पे। ये फर्क है, जब सरफराज बैटिंग कर रहे थे तो यहाँ पे एग्जैक्टली सॉफ्ट हैंड से खेल के उन्होंने 2 रन बनाए थे, और यही डिफरेंस है शायद एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस का। और स्टंप आउट हो गए इस बार। गुगली बिल्कुल रीड नहीं कर सके और खराब शॉट का इंतखाब किया। सलमान अली आगा जल्दी दबाव में आ गए, और जाहिद को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा सीजन में पहली कामयाबी के लिए। जी हाँ, बहुत ही खराब शॉट। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आप एक कप्तान से, जब आपकी टीम आगे लगी और आप इस तरह का खराब शॉट खेल दें, और स्पेशली ऐसे बॉलर को जो बहुत एक्सपीरियंस हैं, बहुत शानदार बॉलर हैं, उनको आप अगर इस तरह मुंह उठा के शॉट मारेंगे तो आप विकेट गवा बैठेंगे। 4 रन बना सके सलमान अली आगा। सरफराज ने स्टंप किया, जाहिद महमूद थे बॉलर। 42 पर 4 सदर्न पंजाब।
6-3 करना है, 6-3 क्यों कर रहा है? इसको मिड विकेट लग एक पे बस। मोइनुद्दीन जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, आज जिनसे विकेट कीपिंग नहीं कराई गई, ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ 14 की औसत है और ये बहुत अरसे से खेल रहे हैं। ये पिछले अशर में भी खेलते रहे T20 क्रिकेट, जब मुल्तान शहर की टीम खेला करती थी। शाबाश शाबाश शाबाश। प्रेशर डेफिनेटली इस वक्त अब सर्दन पंजाब के बैटर्स पे है, ज़्यादा डेप्थ है नहीं है, सिर्फ इमरान रंधावा यहाँ के जो रिकग्नाइज बैटर हैं इसके बाद। और ये विकेट जिसकी हम बात कर रहे थे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी और शायद बॉल को देख भी नहीं रहे थे, बॉल थोड़ा सीधा रहा और एक्स्ट्रा कवर की तरफ शायद मारना चाहते थे। 48वां स्टंप था सरफराज अहमद का करियर का। कितना इत्मीनान था जिस तरह उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और उसके बाद शिकार किया। अब दो ऐसे बैटर्स क्रीज पे हैं जो ज़्यादा मशहूर तो नहीं है, जिनको पहली बार शायद सब देख रहे हैं और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन दोनों बैटर्स के लिए, मोइनुद्दीन के लिए भी और शेरून के लिए भी। अगर यहाँ से मुश्किलात से अपनी टीम को निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट होगा ये सर्दन पंजाब के लिए। स्पेशली शेरून की बात करूँ, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत शानदार करते हैं। गेंद को हवा दी और विकेट मिल गई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। मोइनुद्दीन दूर से शॉट खेलने के लिए गए, गेंद स्लाइस होकर चली गई विद द स्पिन। एक और कामयाबी लेग स्पिनर जाहिद महमूद, जिन्होंने तहलका मचा दिया है अपने पहले ही ओवर में। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि खराब शॉट्स का मुकाबला है सर्दन पंजाब के बैटर्स के दरमियान। सलमान अली आगा ने पहले मारा, इसके बाद मोइनुद्दीन, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। शायद जो एक्सपीरियंस है जाहिद महमूद का वो यहाँ पे काम आते हुए, एक ख़राब शॉट, अपनी विकेट गवा दी, 1 रन बना सके मोइनुद्दीन। 44 पर 5 सर्दन पंजाब। जब 10 ओवर्स के अंदर इमरान रंधावा बैटिंग करने के लिए आ जाएं तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है सर्दन पंजाब की। 44 रन सिर्फ बना है, 5 विकेट्स गवा दी हैं अपनी। इमरान रंधावा 327 रन बना चुके हैं, एवरेज 25 की है, स्ट्राइक रेट अच्छी है, काफ़ी इंप्रेसिव 133 की। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी डिफरेंट है, यहाँ पे रोल डिफरेंट है। इस बार लगी है स्टंप्स पर, अपील के बाद एक और अपील हुई लेकिन खामोशी से इसे मुस्तरद कर दिया अंपायर नासिर हुसैन ने। बाल बचे इमरान रंधावा पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होने से। ये बहुत करीबी मामला है, बॉल सीधा रहा है, शायद इंपैक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप हो सकता है, लेकिन शायद की बात है वो भी, अदरवाइज ये बॉल मिडल एंड ऑफ पे लग रहा था। जी हाँ, बदकिस्मत रहे जाहिद महमूद, इसमें कोई शुबा नहीं। 44, 5 खिलाड़ी आउट। पता नहीं है, मेरी बात नहीं हुई। ठीक है शाबाश। सिंध ने अपनी आखिरी 5 विकेटें 12 रन में गवा दी थी और वो आखिरी 5 विकेटें थी। यहाँ सदर्न पंजाब ने अपनी पहली 5 विकेटें 44 रन में गवा दी हैं। बॉलर्स का पलड़ा भारी रहा है, देखिए बॉल ढीला नहीं करना। अच्छा, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, जरा सा दूर गेंद को गिराया क्योंकि अब बहुत तजुर्बाकार बॉलर बन चुके हैं जाहिद महमूद। सही है। और दोनों स्पिनर्स जो हैं इन्होंने अपनी धाक बिठाई है। पिछले 2 ओवर्स में उन्हें 3 विकेटें ले ली हैं। पकड़ ये
बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत अच्छी कप्तानी भी रही है यहाँ पे साउथ शकील की जानिब से। बहुत मदद उनको हासिल है सरफराज अहमद की विकेट्स के पीछे से। आराम से आराम से। और यही वजह है कि इतनी कमांडिंग पोजीशन में है सिंध इस मैच में। टॉस हारने के बावजूद जिस तरीके से कमबैक किया है इस गेम में, ये बहुत शानदार है। नो 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 नो, ओए लवली साइम बॉल ले बेटा। यहाँ पर स्लाइटली मिस फील्डिंग हुई, इसका नतीजा 1 रन हुआ। तो कोई यहाँ गली मिल नहीं रही, रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का। ये देखिए, ये काफी करीबी मामला था। मुमकिन है कि ऑफ स्टंप के सामने इम्पैक्ट हुआ हो, लेकिन अंपायर ने शक का फायदा दिया और ये बहुत ही जोरदार हिट। बॉल को छोड़ा है। शारून जो हैं बहुत देर से खामोश तमाशाई बने हुए थे दूसरे एंड पर, लेकिन जो ही वो दानिश अजीज के सामने आए उन्होंने खुलकर वार किया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। या शायद इसी तरह की बॉल का इंतजार कर रहे थे शारून। छोड़ा हुआ बॉल था, हवा में छोड़ा हुआ बॉल था, थोड़ा फ्लाइट दिया और लेंथ भी काफी आगे थी। आप देख सकते हैं हवा में छोड़ा बॉल और जो लेंथ थी वो भी बिल्कुल ही सामने थी। नाम से पकड़। हो अच्छा कट शॉट, लेकिन रन एक ही मिलेगा। अपनी महारत दिखा रहे हैं नौजवान शारून साहिवाल से इनका ताल्लुक है। इस ओवर में सिंध की टीम को विकेट नहीं मिली। 10 ओवर्स के बाद 53 पर 5। हाँ जो हो रहा है। देख लो, लेकिन अभी करने दो, अब उसके खत्म करा दो। हाँ ना चल भाई, थोड़ा अंदर रहेंगे। ये वाला ओवर देखते हैं ना, ये कैसे जा रहा है। ये सही है, बहुत अच्छा आराम से। Some very ordinary shot selection from the ATF Southern Punjab batters, throwing the wickets away, trying to go hard at the ball. Again, the panic then sets in. You get indecisive even about those simple singles. Has gone through that short cover position. But after those follow wickets with 53 for 5, surely Sindh will fancy their chances to wrap it up, even trying to defend a low score. I think they've done well. Zahid Mahmood, look at his figures, 1.2 overs, 2 for 5. He almost had the third in the previous over. Well done. These scores are always tricky. And like we were discussing earlier, you have to have a resolute plan. Pick your bowlers to attack. Sindh has been exceptional in terms of the areas they're pitching the ball, and especially the fielding. They have been really good in keeping dot balls in matter. ये पकड़ बहुत अच्छे। हाँ जाहिद ढीला नहीं जाहिद ढीला नहीं। Shout. They've been very adamant. He's been asking questions, Zahid Mahmood. He's been at the stumps through and through testing. There you go. That came in a bit. He's been attacking the stumps, Zahid Mahmood. Awkward single. And he's been really good. 11 over done. ATF Southern Punjab 56 for 5. The spinner Zahid Mahmood grabbing 2 wickets. Danish Aziz with 1. Anwar and Sohail Khan sharing 1 again. It has been the fielding and again just keeping Southern Punjab batters in check.
they haven't really allowed them to dominate and play freely. And fielding has also helped the bowlers. Danish will continue. That required the bottom right of your screen. That will be the worry. Besides that worry, the wickets column is a bigger worry right now for ATF Southern Punjab. Good to have a senior like Sarfraz just right behind the stumps for Saud Shakil. Man management becomes a little easier. One, the senior is there. Two, he's watching every ball coming down the pitch, so he understands what's happening with the batsmen. What are they trying to do? Well bowled, very well bowled, Danny. And then while your actual captain is taking care of the rest of the field, your keeper, being the senior one, can actually take care of the bowler, what he wants him to bowl. That's the captain there, Saud Shakil. So you work in hand. Only one. Meru aaram se. He's always animated behind the stumps, having a go at the batters as well. Early on, he was having some banter going on with Salman Ali Agha. He keeps guiding you about what the batter might be thinking. He's bowling really wide. He's going really wide, Danish Aziz, while trying to bowl, almost cutting the side crease, trying to create that angle into the right-hander. There you go. Catch it! And the slog is a catch it sound, should be out. And they are just on a self-destructive mode, ATF Southern Punjab at the moment. Trembling like guards. No plan whatsoever. They're just watching the bowling, going after it without giving any consent of thought about the field placement, right into the hands. No problems there. And Danish Aziz, he grabbed his wicket. Another one for him. And they are in deep waters now at ATF Southern Punjab. Imran and Dawa gone on 3, 62 for 6. Mohammad Ilyas, the new batter in, with, believe it or not, 6 down for 62 ATF Southern Punjab in the opening game of the Kingdom Valley National T20. Now what they have left in terms of batters is Sharoon, who's not out 23 of 21. And they still require 86 of 49. So that required run rate is pushing them to go for those big hits, but the calculated risk is not being taken here. It's just playing it straight into the hands of the fielders in the deep or inside the circle for that matter. Last ball of the over. Just an edge. Nothing Sarfaraz could do about that. That'll earn him a boundary. And we'll take the score to 66 for 6 after 12. You see how wide he's going, creating the angle into the right-hander, and he's going with the angle, playing that big shot, taking on the fielder in the deep and straight into his hands. Reverse cupping that. So nothing's going right. He's at the 75 marker, that fielder, not even in the deep. Imran Randhawa, the batsman, to be dismissed. So you actually know who's the real boss now.
आजा मेरे पास आ. It's good captaincy from Saud Shakil. Good field placement as well. He's kept his men busy and rotated ballers really well just to maximize the chances of taking wickets. That was required. It wasn't a big total, but he's been very proactive in the field. We've got slip now, and they're hunting for more wickets. Former captain and the current captain standing next to each other. Keeper in first slip. They'll have to adopt on every possible shot that's available. Coming back for two. That's good running. Come on, come on, come on, bache. Come on, come on. Good fielding in the deep. ढीला नहीं यहाँ पे. Look at that. It was a half tracker. Come on, boys. It looked like for a moment it might run away for the boundary. But good work done, cutting off 2 runs. That is a huge difference in Sindh and ATF Southern Punjab. Again high. This is an opportunity for number 7. And it's been dropped. He's messed it up completely. And not only he's messed up the catch, the ball rolls over the rope. Unacceptable. Saim Ayub, he had ample time to come underneath. Yes, it was high. But usually these are the catches you tend to take at this level. Have a look at that. He just overran it and tried to compensate it. Totally missed it. And it rolled away for a boundary. Yes, one. Shabash, shabash, tight, bache, tight. Come on, shabash, shabash. What Sindh has done really good is that they have created that sort of pressure within the power play. Never allowed Swaib to play freely, and that's the chance. Goes high again. This time, there will be no worries. 1 bounce over the fence for 4. That's 6, actually. Timed it really well. As a bowler, you've got to erase that moment out of your system where the catch was dropped and the boundary came. Now you're trying to finish your over quickly, resulting in those fuller deliveries and big shots coming in. And that's what probably is just making Sarfaraz livid at the same time. Last ball. And this over got them 15 with an opportunity of a wicket. 13 gone, 81 for 6. They're trying really hard, Elias and Sharoon. Sharoon on 31 of 24, that's the 6. It was tossed up in the arc, just creating a bit of angle to pierce that gap, and never mattered actually. It was timed really well. The wrist coming into play, slammed it over the boundary. So if spin is working, then part-time left arm spinner. Saad Khan has been given the ball. Just taking a leap or two out of when ATF Southern Punjab were bowling, more spinners were working, but they were using the new ball. Here, Saud Shakil just trying to slow the proceedings down. There'll be runs here, boundary. Just opening the face at the last moment. Some resilience from Sharoon. He's displaying his shots. Again, it's very easy pickings for him. Someone on playing 30-odd runs. Just trying to maneuver that pace, angling it. And what Sarfaraz is doing, he wants his bowlers to target the stumps. Everything within the stumps, no room to be given. Well ball. Pushing for the second one, but it's well done in the end. In the deep, just stopping them from going back for the second.
Dilbashad. Sharoon and Ilyas, they're pretty decent between the wickets, but this time there wasn't a chance to steal that second one. Have a look at that. Athletic fielding. This one-hand pickup. Umair bin Yusuf. It's brilliant. Oh, that'll have a second look. That was above waist, but it's been dispatched for a maximum there. That's a very ordinary ball. The batsman had to do a lot more to control that shot. It's a very, very odd height. It's always tricky on the full tosses, but he managed to just bend his knee and get a good connection out of it. But different umpires go different ways now. When you look at that in the replay on the side on, you can't even see the ball. It's above the eye line. But some umpires feel it's the slower one, the slower balls, even if they're above waist, they are not dangerous for the batsman. They don't usually call it now. Big shot attempted again, and this time he'll be out. Anwar Ali won't miss those. And eventually, it's Sharoon who has to go, the last of the batsmen for ATF Southern Punjab. Probably trying to utilize this over from Saad. One too many shots from him. He was playing brilliantly, he scored 36. But again, you have to know how many shots you can afford to play. And this time, straight to the man. Probably lying to go straighter. Nonetheless, he has to take the walk now. 36, Sharoon made. And ATF Southern Punjab, 93, 7 down. हाँ बेटा ये बॉल अच्छी गिरा दे जरा Sameen Gul, 23 years of age, and he is in with 93 for 7 on the board. बीच में कर बीच में शाबाश अच्छा अच्छा तगड़ा शाबाश 1 for 12 in his first over, Saad. सही है बस come on Good over. 14 gone, 94 for 7. साथ में आ जा अंदू भाई सामने आ जाओ यार साइम इधर आ पॉइंट आ साइम पॉइंट आ सर नेक्स्ट टाइम Well, ATF Southern Punjab has lost the plot of chasing it down. Sharoon, he was playing really well. Should have taken it a little more deep. Wanted to attack and never found a connection. Going against the line. Had to pay the price. So I had to continue. Right arm over the wicket. सही है tight रख जाहिद बस Saudi. The previous over from Zahid was an expensive one, 15 off that. There was an opportunity of a catch in that as well. Boundary missed by the fielder. He's got to put in the effort to finish this spell off. Well, Hassan Khan here. Earlier played a lot of games for Sindh. Moved to ATF Southern Punjab. He's also made the move, played a lot of cricket for Quetta Gladiators. And then went through to the other side with the trade-in. That's a good ball. That's the length. You want to drag his left foot out of the crease. Get him to stretch and reach the ball. Yeah, that's an ideal line and length for a leg spinner. Just enough turn to beat him. Too good for him.
जा 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 आराम से दे दे. Coming back for the second there. Chance, the throw isn't that good. Wide throws makes you work a lot more as a keeper. He played it with soft hand, and right away you could see the intention. He wanted to come back for the second one. Probably the wrong end and a vivid throw. It's a good thing you mentioned about that turn, which Zahid Mahmood got a couple of deliveries ago. The big turns never get you those wickets. They let you look good on TV. It's the fraction bit of a turn that gets you that faint edge. And he got that on that occasion, just missed that bat. 15 gone, it's 99 for 7. अगर 15 ओवर्स के बाद दोनों टीमों पर नज़र डाली जाए तो सिंध ने 115 पर 4 विकेटें गंवाई थी। सदर्न पंजाब की टीम रन्स और विकेट्स दोनों जिम्न में ये पीछे है इस मैच में। इस वक्त मोहम्मद इलियास कोशिश कर रहे हैं उम्मीदों के खिलाफ एक उम्मीद पैदा करने की। 7 गेंदों में उन्होंने 19 रन बनाए हैं। अली माजिद और फैसल अकरम 2 टेलंडर्स को खेलने के लिए आना है। ये अपनी बालादस्ती साबित की सिंध ने। पहले फास्ट बॉलिंग के जरिए, उसके बाद स्पिनर्स आए और वो भी विकेटें लेते रहे। दानिश अजीज़ और जाहिद महमूद जिन्होंने बिल्कुल सर उठाने का मौका ही नहीं दिया। सिर्फ शारून सिराज ने किसी हद तक मुतासिर किया। हम कह सकते हैं कि सदर्न पंजाब की टीम अपने बैटिंग हाफ में ये सिंध के हाथों में ही खेलती रही है। शाहजी जी बिल्कुल, और बिल्कुल एक्सपोज हुई इनकी बैटिंग लाइनअप। कोई प्लान बी नज़र नहीं आया। हालांकि तजर्बेकार खिलाड़ी थे सलमान अली आगा और सुहेब मकसूद। पहली इनिंग्स के आखिर में ये बात वाज़ेह हो गई थी कि यहाँ पर बड़ी हिटें नहीं लग रही, तो रन्स यहाँ पर प्लेसमेंट करके या भाग के बनने थे ज़्यादा, या फिर ख़राब बॉल का इंतज़ार करने से। लेकिन सदर्न पंजाब की बैटिंग लाइनअप ने बिल्कुल भी एप्लीकेशन नहीं दिखाई, और यही वजह है कि बिल्कुल वो 7 विकेटें खो चुके हैं। अभी 100 रन भी नहीं बने। ये अली माजिद थे जिन्हें अभी खेलने को आना है। और यहाँ जो है ताली बजनी चाहिए सऊद शकील के लिए भी, जिस तरह उन्होंने अपने बॉलिंग के वसाइल का यहाँ इस्तेमाल किया। स्पिनर्स को जल्दी लेकर आए। बॉलर्स जो हैं बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग करते रहे हैं। हालांकि कम स्कोर पर आउट होने के बाद कई बार आप ओवर ट्राई करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सऊद शकील जिनको पहले भी तजुर्बा, यहाँ सदर्न पंजाब ने अपने 100 रन मुकम्मल कर लिए। ये पाकिस्तान ए टीम की भी क़यादत कर चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अंडर 19 के साथ भी उन्होंने बहुत वक्त गुजारा है, तो वो तजुर्बा काम आ रहा है। एक ज़माने में पीटीवी की टीम का भी हिस्सा होते थे। यहाँ पाकिस्तान के इस हिस्से में भी इनको क्रिकेट खेलने का काफ़ी तजुर्बा है। फील्डर हैं, लेकिन गेंद आखिर में लग गई हाथ। बहुत ही उम्दा कैच उमर बिन यूसुफ, जिन्होंने आउटफील्ड में अपनी अहमियत यहाँ पर जतला दी। लाजवाब कैच पकड़ा अपने बाएं जानिब जाते हुए, जो कि उनका उल्टा हाथ था। तो इलियास आखिरी बड़ी उम्मीद थे, और उम्मीद की ये शमम भी बुझ गई इस शॉट के साथ। बल्ले से कोई अच्छी आवाज़ नहीं आई, टाइमिंग में मुश्किलात हुई, लेकिन ये कैच और ये विकेट रहेगी उमर बिन यूसुफ के नाम।
बहुत ही शानदार कैच जज किया उन्होंने और बाउंड्री लाइन को भी मद्देनजर रखते हुए इलियास अपने बैट के बॉटम की जानिब देख रहे हैं। अच्छी कोशिश की इन्होंने, बॉलिंग और फील्डिंग में ये खुद भी स्टार रहे थे, लेकिन बैटिंग में इनकी कोशिश लगता है कि राय कहां जाएगी। सिर्फ 8 गेंदों पर 19 रन बनाए सदर्न पंजाब, 108 खिलाड़ी आउट। सिराज ने पकड़ा, कैचेस का मिल सकता है पैकेज। ये वाला, ये लो वाला यार अदनान, एक कैचेस का लुक दीजिएगा, ये जो आज का अच्छा कैच है। सिंध की टीम मुकम्मल गिरफ्त हासिल की हुई इस मैच में। ये कैच देखिए, उमैर बिन यूसुफ ने जज किया और बाउंड्री लाइन पर एक नज़र रखी। अच्छा कनेक्शन नहीं था, बल्ले के बॉटम पे लगी। टाइमिंग में काफ़ी मुश्किलात हुई हैं बैटर्स को यहाँ, ख़ासतौर पे हार्ड लेंथ पर बहुत ही कम बड़ी हिट्स आज देखने को मिली। कितने छक्के लगे? ड्राइव किया लेकिन ये बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाएगी और ये आला तरीके से थ्रो फेंकी गई और इस तरह ये उम्दा ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें सिर्फ 2 रन दिए मीर हमजा ने और विकेट ली 101, 8 खिलाड़ी आउट। वो तो पिला दे, वो लिया यार, येलो वाली मेरी वाली है। सिर्फ 4 छक्के लगे हैं इस पूरे मैच में तारिक, और एक पहली इनिंग्स में 3 इस दूसरे इनिंग में। थोड़ा सा यहाँ पे क्रेडिट सरफराज को भी ज़रूर जाएगा, अपने एक्सपीरियंस का उन्होंने इस्तेमाल किया और मिडिल ऑर्डर में एक कीमती इनिंग्स खेली अपनी टीम के लिए और वही रन्स फैसला कुन साबित हुए। लेकिन सदर्न पंजाब की बैटिंग काफ़ी मायूस कुन रही, बिल्कुल भी सिचुएशन और विकेट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया। एक ही गियर में खेलते रहे तमाम ही बैटर्स और सिवाय शारून सिराज के कोई भी मुज़ाहमत नहीं हुई। टेल एंडर से इतनी ज़्यादा रन्स की तवक्को करना बहुत नाइंसाफ़ी होगी उनसे। उठाकर खेले, मिड ऑफ को सर कर लिया और 4 रन मिल गए सामीन गुल को। यहाँ पर बाउंड्रीज चाहिए हैं क्योंकि जो रन बनाने की दरकार औसत है वो 11 से भी आगे निकल चुकी है और टेल एंडर्स जो हैं वो एक ही तरीके से उनको रन्स बनाना आते हैं, वो लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ रिवर्स स्विंग जो है वो आज तो वैसे भी सीज़न का पहला दिन है, यहाँ रिवर्स स्विंग पाकिस्तान में सबसे कम होती है इस पिच पे। काफ़ी हरा भरा स्क्वायर है और मैदान भी। दो गेंदें सोहेल खान ने की, एक लेंथ बॉल थी और एक आगे गिरी हुई। इस विकेट पे जो बॉल पटके गए विकेट के अंदर उसने बैट्समैन को ज़्यादा तंग किया है क्योंकि वो बिल्कुल भी उस पर टाइमिंग हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। हालांकि अब पूरा दिन इस पे धूप लग चुकी है, दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि दूसरे मैच में इस विकेट का बिहेवियर कैसे होगा। आज भी डबल हेडर है, यहाँ पे तमाम ही दिन डबल हेडर होंगे इस किंगडम वैली नेशनल T20 कप में। T20 में अक्सर देखा गया है शाह फैसल की टीमें जो हैं वो पहले बॉलिंग करना चाहती हैं, फील्डर आ रहे हैं और एक और उम्दा कैच। आज लाजवाब कैचेस का दिन है और साद खान भला वो कैसे पीछे रह सकते थे, उन्होंने बहुत ही आला ये रनिंग कैच लिया बाउंड्री लाइन पर और इस तरह अपनी टीम को जीत के एक कदम और करीब कर दिया। एक बार फिर वही हार्ड लेंथ थी, उसको सही तरह से समीन गुल हिट नहीं कर सके और आखिर में अगेंस्ट द विंड शॉट खेलते हुए कैच आउट हो गए।
मरतबा फिर बल्ले के बीचों बीच बॉल नहीं लगी, और जब बल्ले और गेंद का जब टकराव हुआ तो आवाज़ वो ऐसी नहीं थी जो बैट्समैन को खुश कर दे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरे। समीन गुल ने भी कोशिश की, लेकिन वक्त और मौके के हिसाब से नाकाफी। 11 रन बनाए और सदर्न पंजाब 105 पर 9। गर्म मौसम में जिस तरह आइसक्रीम पिघल जाती है, वही आलम है सदर्न पंजाब की बैटिंग का कि एक भी पार्टनरशिप हमने नहीं देखी है। 20 पर पहली विकेट गिरी थी और उसके बाद से विकेटें जो हैं बहुत ही मुख्तसर वक्फे में वो गिरती रहीं। बैट्समैन आते रहें जाते रहें और एक और विकेट मिल सकती है। सरफराज अहमद, ये उनकी कॉल है और वो ये कैच ले गए और इस तरह सदर्न पंजाब को बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है सिंध ने। सीज़न 2022-2023 के इस पहले मैच में सिंध ने अपनी बर्तरी साबित कर दी तीनों शोबों में और सुहेल खान ने ये आखिरी विकेट हासिल की। दोनों ही टीमें ऑल आउट हो गईं और सदर्न पंजाब की बैटिंग जो है बिल्कुल दीवार से लग गई थी शुरू से ही और सिंध के बॉलर्स ने किसी भी मौके पर उन्हें कदम आगे बढ़ाने का मौका नहीं दिया। सऊद शकील, इनको शाबाश मिलनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स का बजा इस्तेमाल किया। एक मरतबा फिर बॉल विकेट में पटकी सुहेल खान ने और टॉप ऑर्डर बैटर्स भी इस लेंथ पर इस विकेट पर कामयाब नहीं हुए। तो फैसल अकरम की ये कोशिश भी रायगां गई, लेकिन सिंध की टीम ने ज़्यादा स्मार्ट क्रिकेट खेली इस मैच में। और जिस तरह इलियास ने इनिंग्स ब्रेक पर कहा था कि काफ़ी रन उन्होंने शुरू में करवा दिए थे, विकेट को रीड करने में सदर्न पंजाब से गलती हुई, लेकिन सिंध उन्हें दूसरा मौका देने के लिए तैयार नहीं थी। और नए कोच और नए कप्तान की क़यादत में ये एक बहुत ही शानदार आगाज़ है सिंध के लिए। जहाँ आधा काम हो जाता है अगर आप अच्छा आगाज़ पा लें और इस तरह के टूर्नामेंट्स में जिसमें 6 टीमें हों, इब्तिदा अच्छी करना ज़रूरी हो जाता है। दूसरी तरफ सलमान अली आगा और उनके खिलाड़ियों के लिए अच्छी इब्तिदा बिल्कुल नहीं हो सकी। उनके बॉलर्स ने शुरू में जो गलतियां की थी, जाहिर है कि आखिर में उसका वो ज़्यादा मुदावा नहीं कर सके और उनकी जो बैटिंग थी उसमें डेप्थ बिल्कुल नज़र नहीं आई। मां सिवाय नौजवान शारून के कोई भी बैट्समैन जो है वो जम नहीं सका। सऊद शकील के लिए ये बहुत ही मुबारक दिन रहा सिंध की टीम के लिए भी, जो कि 2 बार की सेमीफाइनलिस्ट है। इस बार उससे आगे एक कदम जाना चाहेंगे, लेकिन बहुत कुछ सोचना पड़ेगा अपनी प्लेइंग 11 के मुतालिक, सदर्न पंजाब को अपने बैटिंग ऑर्डर के मुतालिक कि उसमें कैसे तवाज़ुन लाया जाए। जैन अब्बास 14 रन बनाने के बाद LBW आउट हुए सुहेल खान की इन स्विंग पर। सुहेब मकसूद जो इनिंग्स ओपन करने के लिए आए थे वो दानिश अजीज़ की गेंद पर दूर से शॉट खेलते हुए आउट हुए। जीशान अशरफ और सलमान अली आगा आए और गए और आने वाले खिलाड़ियों में सिर्फ शारून और किसी हद तक मोहम्मद इलियास सिंध के बॉलर्स का सामना कर पाए। अपने बॉलिंग के वसाइल का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया सऊद शकील ने। सुहेल खान एक मरतबा फिर 3 विकेटों के साथ नुमाया रहे, लेकिन तमाम ही बॉलिंग यूनिट ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया अपने कप्तान सऊद शकील को। अच्छी स्मार्ट क्रिकेट खेली, विकेट के हिसाब से बहुत अच्छी लेंथ का इंतखाब किया पहले फास्ट बॉलर्स ने और उसके बाद स्पिनर्स ने। जाहिद महमूद के 26 रन पर 2 विकेटें, अच्छा स्पेल था। दानिश अजीज़ ने भी विकेट और कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाया और सिंध ने बिल्कुल सदर्न पंजाब की इनिंग्स का गला घोट के रख दिया। जहां इनिंग्स आगाज सुहेब मकसूद ने किया इस स्क्वायर ड्राइव के जरिए और इब्तिदा में खुश नसीब रहे थे जैन अब्बास, सुहेल खान जिनका नाम इब्तिदाई स्क्वाड में नहीं था। रुमान रईस के जख्मी होने पर उनको बुलाया गया, उन्हें पहली कामयाबी दिलाई। अनवर अली को जल्दी लाया गया
वो भी पीछे नहीं रहे और दानिश अजीज ने ये पहले ओवर में ये बड़ा धचका दिया साधन पंजाब को। सुहेब आउट हुए। सलमान अली आगा ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। बाद में ये विकेटें हाथ लगती चली गई क्योंकि एक ही अंदाज था खेलने का। और फिर जब लेग स्पिनर आए तो रही सही कसर वहाँ निकल गई। पहले ओवर में 2 विकेटें हासिल की जाहिद ने। शारून जो अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे थे वो अनवर अली के हाथों कैच आउट हो गए और उसके बाद ये जो इनिंग्स है अपने मंतकी अंजाम को बहुत जल्दी पहुंच गई। तमाम डिसमिसल्स में आपको एक चीज कदरे मुश्तरक नजर आएगी कि बैटर्स के गेम प्लान की बहुत कमी नजर आई। तमाम ही बैट्समैन बड़े शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए और बिलाशुबा मुबारकबाद सिंध की टीम को। जहां बहुत ही आला कामयाबी हासिल की। 42 रन के बहुत बड़े फर्क से सिंध ने साधारण को शिकस्त दे दी है। 147 रन बनाए सिंध ने। सरफराज अहमद 42 रन के साथ मैच के टॉप स्कोरर रहे। साइम अयूब ने अच्छी इनिंग्स खेली, 20 गेंदों में 30 रन की और शारून ने जवाब दिया 36 रन के साथ। लेकिन सुहेल खान और स्पिनर्स की उम्दा बॉलिंग की ताब नहीं ला सकी साधन पंजाब और 105 से वो आगे नहीं बढ़ सके। तो यहां एक वक्फा आने को है जिसके बाद देखिएगा इनामी तकरीब का अहवाल।
Hello and welcome to the post-match presentation of the first match of the Kingdom Valley National T20. It was between ATF Southern Punjab and Sindh, and what a performance by Sindh, defending a low total, winning this match in the end comfortably by 42 runs. Before I announce the player of the match and of course speak to the captains, I'd like to introduce the guest to my right, Mr. Junaid Zia, who is a GM, Domestic Pakistan Cricket Board. Thank you for being here. And he will be presenting the Kingdom Valley Player of the Match award, which is of course a trophy and cash of 25,000 rupees, and that goes to Sarfaraz Ahmed for his 42 of 32, one catch and a stumping. Brilliant performance with 6 boundaries in that as well. And we'll have a quick word with Sarfaraz now. सरफराज जब गए थे चेस पहले बैटिंग करने के लिए तो एक टोटल सऊद ने बोला था कि 170 180, लेकिन कितनी जल्दी आपने डिसाइड कर लिया बैटिंग करते हुए कि ये शायद पॉसिबल नहीं है? देखिए, जब बीच में मैं और सऊद खेल रहे थे तो हमारी ये बात होती थी कि पार्टनरशिप लगानी है, और वहाँ पे रन्स का फ्लो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। मैं समझता हूँ कि उस टाइम पर जो विकेट गिरी जिसकी वजह से हम उस टोटल तक नहीं पहुँच पाए जो हमने टारगेट किया होता, लेकिन इंडिया ने हमने 150 किया और हमारे बॉलर्स ने और हमारे फील्डर ने हमारा भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से आज हम मैच जीते। कितना आसान या मुश्किल होता है चेंज करना अपने प्लान को? आपने जब देखा दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही हैं तो शायद आपने प्लान किया पूरे 20 ओवर खेलूंगा। देखिए, बिल्कुल टारगेट यही किया था, कोशिश यही की थी कि एक एंड से विकेट गिर रही थी तो कोशिश ये थी कि लंबा लेके जाए, जितना स्कोर बना सकते हैं उतना बनाया। इन दी एंड फ़ायदा हुआ, 150 पे फिनिश किया, और जिस तरीके से हमारे फील्डर्स ने जो फील्डिंग करी, आई थिंक वो जो 15-20 रन का डिफरेंस था वो आज फील्डिंग में कवर किया। यंग कप्तान है और अच्छी बात है, आपका सपोर्ट है, बॉस वही है। हाँ, 100% बॉस वही है और उनकी जितनी सपोर्ट कर सकते हैं उतनी सपोर्ट करेंगे। चलिए, एक अच्छा आगाज हुआ और आई थिंक लो स्कोर आपने डिफेंड किया है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल गया टीम को। वेल प्लेड टुडे। थैंक यू, थैंक यू। सरफराज, एक मैन ऑफ द मैच आज के। नाउ विल लाइक टू इनवाइट सलमान अली आगा, द लूजिंग कैप्टन फ्रॉम ATF सदर्न पंजाब। विल हैव अ क्विक वर्ड विद हिम। सलमान, टॉस जीत के फैसला जो आपने किया वो बिल्कुल शायद सही था, चेज करेंगे, लेकिन कहाँ लगता है फॉल्टर कर गए जब आप लोगों ने बॉलिंग अच्छी की थी, लो टोटल पे इनको आउट भी कर दिया था? बॉलिंग और फील्डिंग तो हमारी अच्छी हुई थी और जितना टोटल हम चाहते थे उनको स्टिक करना उसमें स्टिक भी कर लिया था, लेकिन आई थिंक बैटिंग हमने उसना अप टू द मार्क नहीं की, जिसकी वजह से हम मैच आ रहे हैं। कुछ आपको लगता है मतलब किस चीज़ को आप ज़्यादा फाइन ट्यून करना चाहेंगे? शॉट सिलेक्शन आपको लगता है गलत हुई है या आपको लगता है कि यहाँ स्पिनर्स का काफ़ी से है? ऑब्वियसली जो सुबह का मैच है उसमें फ्री फ्लोइंग शॉटें नहीं लगेंगी, उसमें आपको अपना बैट्समैन को टाइम लेना ही पड़ेगा और कोशिश करेंगे नेक्स्ट मैच में हम कोशिश करेंगे पहले टाइम लें और कोशिश ये करेंगे 20 ओवर खेलें। अगर आप 20 ओवर खेलते हैं तो आप 150 इजीली चेस कर सकते थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। Salman Ali Agha, the captain of ATF Southern Punjab, now the captain of Sindh, Saud Shakil. We'll request him to come forward and we'll have a quick word with him. ऐसा एक विन मिल जाए टूर्नामेंट के आगाज़ में ही सऊद तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। लो टोटल को आपने डिफेंड कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे एरियाज़ जहां शायद बैटिंग में और बेटर कर सकते थे। जी विन बहुत इंपॉर्टेंट होती है टूर्नामेंट के स्टार्ट में। अगर आपको एक विन मिल जाए तो वो काफ़ी टीम के मोराल को बूस्ट कर सकती है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें थी, हम शायद 15 रन यहाँ मज़ीद ऐड कर सकते थे अगर एंड में 1-2 अच्छी शॉटें लग जाती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट है, सुबह वाले मैचेस में इतना ही टोटल बनेगा। आपने टॉस के टाइम पे बात की थी, मैंने अभी यही जिक्र किया कि 170 हम रखेंगे, लेकिन कहाँ जाके आपको लगा कितनी देर में कि शायद टोटल इतना ना हो पाए और प्लान बी पे जाएं? हाँ नहीं, प्लान भी ऐसा नहीं था, लेकिन जब हम जिस मौके पे बैटिंग कर रहे थे, सरफराज भाई जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, फिर हमारे बीच में पार्टनरशिप लगी तो 170 मेरे माइंड में था, लेकिन एक अगर एंड में 1-2 हमारी अच्छी हिट्स लग जाती है, अगर हमारा अच्छा फिनिश होता तो हम अराउंड 165-170 फिनिश करते। बॉलिंग बड़ी शानदार रही टीम की, आपने 3 पेसर्स के साथ यूज़ किया कंपेयर टू आपकी ऑपोजिशन ज़्यादा स्पिन पे रिलाई कर रही थी, 2 स्पिनर्स के साथ ही गए, तो यही कॉम्बिनेशन आपको लगता है सही रहेगा फ्यूचर में या पार्ट टाइमर्स हों और अच्छा है? हाँ, कॉम्बिनेशन तो आप जिस तरह टूर्नामेंट आगे जाता रहता है आप डिफरेंट ट्राई करते रहते हैं, मेरे ख्याल में ये कॉम्बिनेशन बेहतर रहेगा और बॉलिंग स्पिनर्स ने अपना काम यहाँ पे पूरा किया तो अच्छा रहा। चलिए, कांग्रेचुलेशंस ऑन द विन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैप्टन ऑफ सिंध सऊद शकील, और इस तरह से ये पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन खत्म होती है। डोंट फॉरगेट वी गॉट वन मोर गेम लाइंड अप एंड दैट इज इन अ व्हाइल, दैट विल बी बिटवीन सेंट्रल पंजाब एंड बलूचिस्तान इन मैच 2 राइट हियर एट द पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। First boundary of the tournament. Oh, nicely pulled. Very nicely pulled. It has gone all the way. लाजवाब कैच मोहम्मद इलियास। Sweeping, that's his go-to shot, Sarfaraz. Top edge, Sindh's first 6 was in the 16th over. Shout. Has it pitched outside? No, it hasn't. It's been given.
मौका है